गया वो घड़ी आ गया. It's Champions League night, quarterfinals, man. Been waiting for so long. मतलब these are the nights, हम wait करते हैं. Of course, Baba in the house. Baba, welcome back to Almighty Blues FC. मजा आने वाला है भैया, मजा आने वाला है. मतलब आज की रात है कि हम मजा ले लेते हैं. फिर कल तो Exactly. कल तो हमको नर्वस लेकर रह बैठना पड़ेगा पूरे टाइम. लेकिन अभी भी आज मतलब मैं तो ऑप्टिमिस्टिक सोच रहा हूँ कि हम जीतने वाले हैं, इसलिए whom will meet probably in the semis. आज probably will determine slightly तो वो थोड़ा सा है मन में. लेकिन you're right, probably honestly it's about just kind of enjoying the match आज, और फिर देखते क्या होता है. And of course here Advay, like the stream guys, of course thank you Advay join करने के लिए. Hello boss for sure. Or I think Dhenuka is also joining us. Let me get her in right away. Hi Dhenuka, how are you? Hi, good. Good to have you again, of course. I don't know, Champions League night, like मैं पापा वही बोल रहे थे ना, it's probably the neutral night हमारे लिए तो it's like थोड़ा मस्ती होगा. Hopefully we'll just get a good match. लेकिन are you thinking about the semis already? Like मैं तो already सोच रहा हूँ personally. यार मैं वही बोल रही थी ना, this is one game I can watch stress free. तो कल के पहले तो might as well. Absolutely. Again, anyone joining, do like the stream or do check out, I think Bombay Penia's Insta ID का handle है नीचे, तो please give them a follow and drop by यार, come on. अगर नहीं पता तो यार पता नहीं कहाँ रहे हो आप. अरे इतना कुछ नहीं. अरे बाबा मैंने एक्चुअली लेट देखा यार स्पोर्ट्स यारी वाला, मस्त था, मतलब awesome. That was very good by the way. ये दिनेश कार्तिक सुपरबसी, ऑनेस्टली बोलूं मेरी एक्चुअली गुड मूड का रीजन यही है. दिनेश कार्तिक सुपरबसी जीत गई क्या आरसीबी? अरे हाँ भाई, मैं क्या बात कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ ना कि मैं एक्चुअली पावर नैप लेने का सोच रहा था, लेकिन मैं सोचा हारेगी, चलो पावर नैप ले लेते, लेकिन फिर मारना शुरू कर दिया. अबे जिता दिया. वो भी you have to see what an inning, but again that's अबे 44 बना दिए 23 बॉल में भाई. अरे 7 ओवर में 84. अबे शाहबाज अहमद भी बना गया 45 रन यार. मेरे को लगा जीत जाएगी राजस्थान आराम से. नहीं. Why do I care? I am not a Rajasthan fan, although I live in Rajasthan. अरे मैं तो काफी खुश हूँ. लेकिन yes, of course, राजू मास्टर इन द हाउस. राजू मास्टर ओजी यार, ट्रूली ओजी, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ. आपको याद है क्या आईपीएल प्रीव्यू में बोला था आपको दो विल बी द की? yes of course, and we'll discuss that again. अमर, हम ऑलमाइटी ब्लूज क्रिकेट में कल करेंगे. धेनुका मुंबई इंडियंस. यार मैं आईपीएल फॉलो नहीं करती हूँ फॉर गुड रीजन. एंटी आईपीएल थोड़ा बहुत भी आईपीएल भी नहीं हूँ. नहीं एंटी आईपीएल भी नहीं हूँ, बट मैं बोल रही थी ना थोड़ी हिपस्टर जैसी बात है, बट आई डोंट फॉलो आईपीएल. मैं क्रिकेट फॉलो करती हूँ लेकिन आईपीएल नहीं करती इतना. एंड आई थिंक प्योरली बिकॉज एक ऐसा एडिक्शन नहीं होगा यार, ये फुटबॉल में मेरा इतना टाइम चला जाता है. आईपीएल तो देखो मैंने कोशिश करी थी कवर करने की. सीजन शुरू में 2-3 वीडियो भी निकाले, पर मेरे को लगा कि कवर तो नहीं हो पाएगा, अपन देख ही लेते हैं, वही बहुत है. नहीं वो बहुत स्ट्रेस हो जाता है. फिर मुझे ना वहाँ एक टीम रख लिया ना, फिर ये एक रियल मैड्रिड और फिर वहाँ पे एक और, नहीं होता मुझसे अभी. नहीं that's fair enough. लेकिन अगेन अपनी भी चॉइस है. Having said that यार, मैन सिटी एटलेटिको मैड्रिड, होपफुली यार एक टक्कर का मिले. It should not be one sided. Like there are chances, मतलब इधर भी हो सकता है. वैसे मैंने एक पोल डाला है, बहुत ही इंटरेस्टिंग पोल, कि यार रेड कार्ड होगा कि नहीं आज. I don't know, like for me high possibility लग रहा है. धेनुका, what do you think? फर्स्ट लेग में तो नहीं होगा यार. नहीं है ना. पता नहीं, देखते हैं कि आज एटलेटिक कैसे खेलती है उस पे. सो राइट एब्सोल्युटली. कुछ है कोई मतलब येलोस पे वगैरह मैंने एक्चुअली इतना देखा नहीं है एटलेटिक. तो दूसरे मैच में बेंफिका लिवरपूल में बेंफिका हैव 7 प्लेयर्स हैं जो उनका तो दैट इज दे विल गो ऑल आउट. दे हैव नथिंग टू लूज. तो राइट डू और डाई उनके लिए. तो ये वाले गेम में पता नहीं ना, अपन हमेशा शाइन करते हैं ब्रो, नेचुरल शाइन. अरे एब्सोल्युटली, वही मैं सोचा यार ये क्या होता है वो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का होता है ना वो, मतलब टू डिटरमाइन हाउ शाइनी एन ऑब्जेक्ट इज. तो मेरा सबसे ज्यादा है. सही है ऑसम. लेकिन यार लाइनअप से देख लेते क्विकली. यहाँ पर मैन सिटी पता नहीं यार ओवरथिंक कर रहे हैं कि नहीं. जॉन स्टोन्स राइट बैक खेला है रिसेंटली. ऑफ कोर्स काइल वॉकर नहीं है आज मैच में, करास्को भी नहीं है एटलेटिको मैड्रिड. बाबा व्हाट डू यू थिंक? लाइक बाकी तो यार क्वाइट एक्सपेक्टेड राइट. कुछ ऐसे कुछ सरप्राइजिंग तो नहीं यार. मैं रॉड्रिगो डी पॉल चाह रहा था टीम में, मतलब रॉड्रिगो डी पॉल नहीं है, ये थोड़ा सा मेरे लिए एक वो है. बाकी तो आई थिंक इट्स काइंड ऑफ प्रेडिक्टेबल. और
just for that big game experience, Suarez in place of Griezmann, but I understand why Griezmann is playing. बस ये मतलब सुआरेज का इतना शॉकिंग नहीं, रोड्रिगो डी पॉल थोड़ा सा मतलब शॉकिंग तो नहीं बोलूंगा, बट थोड़ा अटपटा लग रहा है कि व्हाई ही इज नॉट प्लेइंग, मतलब ही इज बीन I ओके. think I don't know, Dhenuka, you might correct me. Like, you know, I'm assuming like maybe a work rate factor है, physical factor. What the same thing like Baba said about Suarez not being playing, Griezmann playing. Plus, if you see Jimenez is not there, so again there is a loss. So maybe they're just getting more workers on the pitch. Is that the reason why you think Rodrigo de Paul? I think so. That there's no other explanation. I also think so. It's because of that. Right, and I think पता नहीं यार, I think Stones on right hand side, like I know मतलब he has played that before, but as in if at all there is a possible अरे ये opening गलत दिखा रहे हैं, ये कंसेलो खेलेगा राइट पे, ये गलत दिखा रहे हैं. ये तो Cancelo Aki will be a left back क्या? हाँ, Aki left back and Stones center back with Laporte. हाँ वही लग रहा है, as in that's what it is. Like और options क्या था इनके पास? बेंच पर देखते हैं. जिनचेंको पता नहीं यार बेचारा, I know it's going through a lot right now, लेकिन is that the reason? क्या लगता है बाबा, जिनचेंको को दिखाया नहीं है ट्रस्ट ज्यादा इस सीजन में ना? मतलब वही है शायद, जिनचेंको मतलब मोबिलिटी तो लेके आता है, बट ही इज नॉट दैट सॉलिड. लेकिन आके भी कोई इतना बढ़िया तो है नहीं. ही इज आल्सो लुक्ड अ बिट शेकी. पता नहीं यार, जिनचेंको थोड़ा सा मेरे हिसाब से शायद आज तो इसलिए चांस नहीं दिया है क्योंकि जिनचेंको हैज द टेंडेंसी ऑफ टकिंग इन द मिडफील्ड टू मच, नैरो डाउन करना. और काइल वॉकर नहीं है तो यू नीड दैट एक्स्ट्रा इंश्योरेंस पीछे आज टू मेंटेन द शेप. तो दैट्स व्हाई आई थिंक जिनचेंको इज नॉट प्लेइंग. काइल वॉकर होता तो वी कुड हैव सीन जिनचेंको. या वो बैलेंस हो जाता, राइट. धेनुका आपके लिए मैसेज है स्क्रीन पर, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज. धेनुका जी शुड आल्सो ओपन यूट्यूब चैनल. नहीं, फिर हमको कोई नहीं देखेगा और हमारी दुकान बंद हो जाएगी. नहीं मजाक कर रहा हूँ. नहीं बट हाँ मतलब रियली मतलब बहुत मेहनत का काम होता है ये यूट्यूब चैनल संभालना. मुझे पता नहीं मुझसे हो पाएगा कि right. No problem. Baba opinion was absolutely well. Me hitting my head after listening to Baba's science. ऐसा ही है भाई. What the refractive index किस चीज का? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, मैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोल रहा था. हाँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जैक्टली. यस करास्को आ जाएगा, यस सेकंड लेग में आएगा. आई थिंक वॉकर भी शायद ये थर्ड गेम है तो वो भी विल बी बैक आई गेस. बट अगेन लाइक आई थिंक पेप ने बोला था ना कि यार इट वाज प्लेनली स्टूपिड जो दिया था उसके थर्ड का. लेकिन आई डोंट नो लाइक ओवरथिंकिंग का बाबा, आई डोंट नो इफ यू हर्ड पेप इज लाइक उसने कहा 12 लोगों से खेलूंगा मैं. ब्रिलियंट मैन. वो तो खैर हाँ मतलब बट ठीक है यार, मतलब कुछ ज्यादा ही उसको वो किया जाता है कि ओवरथिंक करता है और ये और वो. बट मेरे को नहीं लगता कि इतना ओवरथिंक वाला इशू है. यस आई थिंक इनका एटलेटिको का दे आर नॉट. आई थिंक दिस शुड बी एन इजी विन फॉर सिटी इफ दे ऑप्शन क्या है? एक तो डिपॉल है और कौन ऑप्शन है? आई थिंक सुआरेज है, कोरिया is an option, right? He's done pretty well as well. पता नहीं लेकिन यार उनका they don't have Jimenez, मतलब वो सब it's a big thing. They are a tottering team and जो अभी फॉर्म में थोड़ी बहुत मतलब वो लोग थोड़ा बहुत अच्छा खेल रहे हैं उसमें भी उन लोगों का मतलब if they don't have players it's a big यार रात के मतलब 12:15 बजे भाई दो वेरिएबल है इसमें, यू नीड 2 इक्वेशंस. तो एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा ये. 2 वेरिएबल हैं तो 2 इक्वेशन चाहिए आपको. मैं तो यार एक इक्वेशन से सॉल्व नहीं होगा ये. Baba is the sweetest person. Always reply Insta DM no matter how busy he is. Okay, interesting. यार मेरे को बहुत hats off to people who can do that. सच में. नहीं मेरे को एक्चुअली में काफी क्रिटिसिज्म मिलता है कि यार बाबा आप मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते, ये वो. मैं मेरे बहुत मतलब मैं कोशिश करता हूँ जितना हो सके रिप्लाई करने का, बट यार मतलब भाई थोड़ा माफ कर दें. मतलब कभी नहीं मिल पाता इतना टाइम कि सारे मैसेजेस का मैं देख के रिप्लाई करूँ. फिर उसमें क्या जब खोलता हूँ ना तो आधी तो गालियां होती हैं, तो वैसे ही मूड ऑफ हो जाता. नहीं perks of being a Chelsea fan. वो पहले बोला था. I think that is universal. कुछ नहीं कर सकते.
Right. I think probably Dhenuka hasn't same. I'm pretty sure like you're the same in terms of Insta DM. Like I think it's really अरे difficult. आई एम होपलेस इसलिए तो मैंने बता दिया था ना सबको दिस इज माय नंबर बिकॉज आई मिस एवरीथिंग आई मिस द जेन्युइन मैसेजेस आई मिस ऑल द आई मिस सो मेनी मैसेजेस एंड आई डोंट हैव नोटिफिकेशंस ऑन मेरे सोशल मीडिया फॉर माय नहीं फिर वो तो दिन भर ही बजता रहेगा, वही बजता रहेगा। वही तो मेरे वो सोशल वो अलर्ट्स नोटिफिकेशंस कुछ ऑन नहीं है, एंड देन ऑफिस के काम के बीच में कहाँ वो सब भी देखो ना, सो आई मिस अ लॉट ऑफ थिंग्स। Right. So coming back to the match, I think Felix false nine यार पता नहीं मतलब मुझे लगता है it'll be like one of Felix or Griezmann. I think Griezmann will be the floater, right? I वही लग रहा है मुझे। I think so. Felix false nine पता नहीं, I don't think so. He's not. I think Felix will be your inside forward जो थोड़ा सा width आपको provide कराएगा, kind of. हाँ मतलब दोनों inside forward जैसे खेलेंगे, मतलब I don't think वो किसी को छोड़ेंगे up top, like they don't they probably have हाँ वही है तो okay anyway बाबा real genius coaching ले लो तुमसे, okay interesting good question था, nice okay wait let me get अरे यार शुरू एक सही है या तो क्लास शुरू हो जाएगी पता रहता तो रात को वॉच अलाउंग यार डिफरेंट था। Yes, of course, like the stream यार बेंफिका लिवरपूल का देखते हैं। बेंफिका में आई नो बहुत लोग आई थिंक येलो कार्ड्स पे है। अगेन वही क्वेश्चन था कि यार साला खेलेगा कि नहीं। आई थिंक खेलना ही था, बड़ा मैच है, ही हैड टू स्टार्ट डिस्पाइट परफॉर्मेंस वीकेंड में लेकिन कुछ सरप्राइज दिख रहा है। कोनाटे स्टार्टिंग एट द बैक, केटा आई थिंक डियाज, आई डोंट नो, जोटा नॉट स्टार्टिंग। बाबा लाइक व्हाट डू यू थिंक, लाइक माने विद द अभी सिटी से खेलना है ना इनको अगला मैच प्रीमियर लीग में। आई थिंक वही रीजन है, जोटा उसके लिए बचा रहे हैं और आई थिंक दिस लाइनअप इज गुड इनफ टू पिटाई करो बेंफिका। एंड आई थिंक उनके सारे प्लेयर्स वर अवेलेबल आज के मैच के लिए, सो इट इज टैक्टिकल ओनली, इट्स नॉट इंजरी या कुछ तो नहीं। पता नहीं आदिल तरात वापस आ रहा है बाय द वे बेंफिका में, तो दैट माइट बी एग्जैक्टली। आई नो नूनेस तो ही खैर मतलब ही इज प्रॉब्ली द वन टू वॉच आउट फॉर, लेकिन बेंच देख लेते हैं। बेंच देखो मतलब अगेन नो कंपैरिजन ओनली, इतने सारे ऑप्शंस है लिवरपूल के पास, बट आई डोंट नो बाबा, लाइक आई डिडंट डिस्कस विद यू ऑन दिस, व्हाट इज योर प्रेडिक्शन? लिवरपूल बेंफिका आज ही खत्म हो जाएगा मैच, क्या लगता है? 2-0 3-0 और नेक्स्ट लेग भी मतलब 4-0 5-0 टाइप कुछ हो जाएगा इनका एग्रीगेट अक्रॉस टू लेग्स। पिटाई ओपन चैट बॉयज। And Dhenuka, what was your prediction इसमें बेंफिका लिवरपूल में? बेंफिका लिवरपूल I also think आज तो it's super easy, तो I also think it will be a high scoring game for obviously लिवरपूल के फेवर में। minimum 3 तो होगा। Okay, I think studies be more interesting than this game. Okay, यार, that is the motivation, man. Then come on, यार, आप example हो, बाकी सब लोग के लिए, बच्चे लोग देखो आप, Adwe in the house, absolutely. Well, अंकित भैया कॉलेज प्रोजेक्ट के कोड में हेल्प कर दो। Okay, no, don't worry भाई, as in come on, as in I'm in college as well, like I say, definitely मेरा काम होने के बाद कर दूंगा। What a win for RCB tonight, probably best game this season till now. Yes, absolutely. यार मेरा एक्चुअली मन करता तो यार मैं RCB डिस्कस करता पूरा, अभी मैं तो खुद इतना एक्साइटेड हूँ उस गेम के बारे में, है ना। दैट इज समथिंग दैट हम करेंगे यार, कल करेंगे सर्टेनली, डिटेल में करेंगे, वी प्लान अ स्ट्रीम फॉर श्योर। पेप, हम सिटी फैंस हमेशा शॉक देता है अतरंगी लाइनअप से। यार फुटबॉल प्लेक्स आई डोंट नो, आज तो अतरंगी नहीं है, आज तो आई थिंक इट वाज क्वाइट एक्सपेक्टेड। हाँ वो football.com में दिखा रहा है जॉन स्टोन्स राइट बैक, but like Baba said, I think Nathan Aki is good enough for left back. नहीं Dhenuka? Sorry, what? Sorry. मैंने नहीं, City का जो lineup है, I think there are no real surprises, ना. I think we kind of expected that with Kyle Walker. No, it doesn't. Yeah, it doesn't look like a surprise or anything. This is a predictable lineup only. मतलब no shocks. मेरा Felix comment. अरे यार एक comment miss कर दिया, आता वापस. False 9 वाला. नहीं। हाँ false 9 बात किया ना, सेम ही comment था भाई वो। Basically the two people commented, so why would I repeat? But absolutely, welcome to ask any questions you have. Pep, हम City fans हमेशा शॉक कर गए, तो हो गया था right? Then next, okay, CFC5 in the house, big up bro. I think CFC5 is also streaming. I don't know brother if you ended streaming, but yeah, big up if you kind of joined in just after stream. But people to check out, especially Chelsea fans, CFC5 to check out, very good channel, upcoming one. And Marathi Cooler as well, very good channel. Like Benfica fight करेगी, even वो लोग जीत नहीं जाते. Okay, but I don't know.
लिवरपूल बेंफिका द फॉर्म दे आर इन ना, वो इसलिए दैट्स द ओनली थिंग. अगर ये और कोई भी ऐसा टीम होता जहाँ पे बेंफिका वाज द अंडरडॉग एंड इफ इट वाज लाइक सम अदर टीम ना, देन इट वुड हैव स्टिल बीन. But they did lose, right, over the weekend. They're coming off a loss, I think 3-2 loss against Sporting Braga. So probably again this was, I think, my first loss tha in a while. But again, Liverpool are on a different kind of level now, right? Benfica pick attacking team. Baba is love. Yes, of course. Anonymous memer. Good to see you. Anonymous memer is my channel's OG. मतलब मेरे जब 100-200 सब्सक्राइबर थे ना, तब से Anonymous memer. Yes, I think people might be sleeping. Yeah, I think there is a possibility. Yes, RCB, of course, bhai. Thank you. As in huge relief that Stones he खेलेगा right back. He has played before. I'm pretty sure about it. Okay, देखते. Let's see. And again, I would actually go either way, but it's fine as long as the midfield broke by. I think वही है, like Dhenuka told about the midfield of Atletico, right? They are there just to kind of block that attack of Man City, simply put. But I don't know, like what about Simeone, Dhenuka? Like anything that Simeone can come up with in this game? Like what do you think? Something else that he'll do in the game altogether? Just tactics in the sidelines? How's he been on the sidelines? Because last game, I think it was the talk of the town, right? Look, they are going to play the kind of football they always play. That's the way that's what he knows. तो वहाँ तो मुझे I don't think there will be any surprises वहाँ पे. And Benfica full attack करेगी and they will try to stop that and also try to score on the counter. That's how they're fast on the counter. So that's how Atletico plays. So I think they'll go with more of that only. But यही है कि उनके पास Jimenez नहीं है, आज Felipe है. They वहाँ पे भी they will also struggle, I think, वहाँ पे. Possibly. I don't know if there's any news on this one. Gareth Bale, I don't know, like golf, if he's kind of done with that, then maybe there is a back to football tomorrow. But as in jokes apart, I think Baba, what do you think, yaar? Bale, he should be given a chance, right? Finally. अरे अभी हम बात कर ही रहे थे पिछले पॉडकास्ट पे जो हम प्रीव्यू कर रहे थे, तो उस पे यही डिस्कस कर रहे थे कि मतलब वही कार्लो एंचेलोटी की जो स्टबर्ननेस है, और वो धेनुका ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था जो लव हेट रिलेशनशिप रहा है गैरेथ बेल का विद रियल मैड्रिड, तो हाउ इट प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम स्टार्टिंग इन दीज बिग गेम्स. तो वही है, मतलब नो मैटर हाउ वेल ही परफॉर्म्स ऑन द बिग स्टेज, वो वेल्स के साथ जो करके आए, बट स्टिल एंचेलोटी विल स्टिक टू असेंसियो और रॉड्रिगो. वही वाली चीज है, मुश्किल होगा बेल को देखना. Right. Although I think Divyansh also suggesting me that about Valverde being that the pseudo winger, right winger. But again, like वो लगता नहीं मुझे, like I am with you guys, like he'll go tried and tested. Same with Tuchel ना, मतलब I don't think ज़्यादा experiment होगा. Well, absolutely, we all love Baba as well. Well, if you have watched LFC last few weeks, their performances have not matched the results. Just something to be aware of. Yeah, मतलब 100% agree. But again, वो एक है killer instinct, यार. Something is happening. वो बोलो destiny बोलो जो भी बोलो. I think Liverpool fans they have a song, right? They were singing that. Yes, I think in the weekend win after Watford, they have a song which they sing. I believe only जब उनको लगता है कि they are near the title. So I'm not sure what is the exact lyric. Any Liverpool fan house. So that was the news that they are singing after the match. So there is something to it. Again, there is a story to it. Any Liverpool fans can help me with the history. Like that's a very interesting story. I don't know, Real Madrid. I'm hoping they don't have a song when we go to Bernabeu. सब स्पेनिश में है, कुछ फर्क नहीं पड़ता. चलो, अच्छा समझ में नहीं आएगा तो चलो, we are like good. हमारा वही है. We have the एक कोमुनते वो या केरे. You have that. जिसका इतना weird है वो song ना actually 9th के लिए 9th चैंपियंस लीग के लिए बनाया था. So it ends with Novena way because which is 9, right? और फिर उसका ऐसे जाता है वो and then पूरा आता है and then it basically means how can I not love you, especially when you are getting me the 9th. ऐसा है वो Novena way. और उसके बाद उन्होंने ना कुछ तो ऑफिशियली शायद चेंज नहीं किया या क्या हुआ पता नहीं.
after that there is full confusion because no one knows what to sing now क्योंकि 13-14 किसी को कुछ पता नहीं है क्या है the numeral itself, so it is full confusion. तो anyway point is वो कुछ समझ में नहीं आएगा वो anyway Spanish में. Yeah, but anyway, यार good आपने share किया. Dhenuka OP in the chat, everyone. Good one that. There's something to it, right? क्या बेल ने कंफर्म कर दिया, ये एंचेलोटी ने कंफर्म कर दिया बेल का? नहीं लाइन स्क्वाड में है, आया तो है यार, स्क्वाड में तो है. They will start with Ancelotti. यार कीर्ति, thank you for the ये super कहाँ chat. से आ गया? I don't know यार, देखते हैं मतलब कहाँ कीर्ति, if you can just confirm again, where did you see that? I am actually looking for tweets. क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो घर से कर लिया हुआ जूम कॉल पे. कोर्टवा था आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने बताया नहीं. कोर्टवा ने दिया था आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो. Okay. But anyway, thanks for sharing that, Kirti. Of course, hopefully अगर वो होता है, then I don't know, मतलब बाबा Pablo Escobar versus Bale, ready? नहीं भाई, I will be very nervous. नहीं होना चाहिए. Pablo Escobar को घुमा देंगे Bale. तब पता चला मालन सर और अलोंसो दोनों खेल रहे साथ में. You know, it's the battle proper. वो भी मुझे लगता है काफी नहीं होगा बेल को रोकने के लिए. नहीं, जब एक्चुअली जब भी कार्लो ने बेल को खिलाया भी था ना, he played him in a very weird position against Villarreal. तो जब भी वो सेंटर फॉरवर्ड क्या? Yeah, he played center forward for थोड़ा मतलब थोड़े टाइम के लिए, and then he switched him, then he changed him, and then he was playing better obviously, by which time he got substituted. So no one really knows कि वो like the scope or anything कुछ पता नहीं है, because by that time substitution हो गया था. He got like Bale was substituted. So very weird. मेरा क्या है ना, वो कार्लो, I don't know what he comes up with all these false nines now. I'm really very scared. Anyone as a false nine, I'm scared. नहीं चाहिए. I just want Modric again. Come on, let's have it. Second time lucky. And वो on paper Modric was the false nine, हाँ, लेकिन क्रूज भी खेल रहा था वहाँ पे, Modric भी खेल रहा था. At one time तो 3-4 जन खेल, कोई भी आ रहा था like, and then Cruz was also playing backline के साथ भी खेल रहा था. वो Casemiro सबके सब पीछे भी खेल रहा है और आगे भी खेल रहा है. ये क्या चल रहा? Man, that I've never seen the kind of chaos that I've seen in that match. So I don't want any. He started Asensio as a false nine twice, I think. Disastrous. So I don't want any false nines. No. Bale, I think कल तो मतलब obviously Benzema is there, तो मतलब not to worry. लेकिन हाँ बाबा, Anthony Taylor and Paul Tierney is the match referee for City was a Liverpool game. मजा आएगा. हाँ, as a neutral I would love it, man. As in, this is what I'm waiting for then. Controversy OP. Exactly. Dhenuka ma'am, of course. Then okay, Asensio's only fans be called only screamers. Yes. 10 साल हो गए ये चैंपियंस लीग इंट्रो वाले स्टेडियम में, आज तक एक मैच नहीं देखा. इज द स्टार स्टेडियम जस्ट अ मिथ? स्टार स्टेडियम जस्ट अ मिथ? ओके. ये कैसा सवाल था? क्यूट हो यार. Come on, bhai. I think you always need some kind of graphics, right? So that is what it is for. Don't worry, guys. Pablo Escobar will bring marijuana for Bale. Okay, ये trick है. अद्वै ने अच्छा trick दिया है. Let's see. But शाश्वत भैया OP. Come on, अरे thanks यार. to your बाबा's name. पता है आजकल कोई मुझे शाश्वत बोलता है ना, तो मैं थोड़ा सा वैसा हो जाता हूँ. अरे कल Dhenuka में बात ही कर रहे थे normally, no? I think Dhenuka you said, I'm like, it took me 2 seconds to actually, strike. Okay, fine. Has Dhenuka frozen or is she just smiling? I think she has frozen. Oh, okay. But nice way to freeze. Yes. Let me message her. I think okay, they're just singing the anthem. अभी शुरू ही हो रहा है. I think StreamYard में कुछ issue है, पता नहीं. I think कल भी हो रहा था थोड़ा. So it should be back. Anyway, so okay, अभी दिखा रहे. अच्छा, ऑफिशियल लाइनअप पे भी स्टोन्स को ही दिखा रहे हैं बाबा, राइट बैक. अच्छा, तो हो सकता है खेले. तो देखते हैं. तो क्रूज इज लाइक मिस्टर परफेक्शनिस्ट. हाँ, मतलब कार्लो क्रूज के साथ ही जाएगा मोस्टली, नहीं? आई मीन यही है, वो अपना जो ट्राइड एंड टेस्टेड है उसी पे भरोसा करता है वो, तो वही वाली चीज है. देखते हैं क्या होता है. बट हाँ, मजा बहुत आएगा का.
Ram Ram. Okay, Dhenuka is back here. Hey Dhenuka. हम लोग को लग रहा था आप एक्चुअली ना स्माइल कर रहे थे हमारे जोक पे. I'm like okay fine. So I'm like okay I took us a minute. Michael, big up. Michael, big up. Dhenuka, I think there was a question for you. International team. Which is your favorite international team? Spain. Spain. Okay. And then absolutely, I'm shocked to hear that. Like, come on, it has got to be Spain, right? There's so many Madrid players out there and Barca No, players. not anymore. But not anymore. But when I did start following them, there were Yeah, of course. a lot. Easily. Exactly. And I think if I'm not wrong, you had told once. I think Raul is one of your favorites, right? If I'm not wrong. My favorite, not one. Raul is my favorite player. I got it. Of all time. Of all time. Oh, full Etihad. क्या बात है. हाँ Really? लग तो रहा है टीवी पे. क्या मतलब ज्यादा एथलेटिको मैड्रिड को टिकट्स मिल गए क्या? मजाक ही था वो. पीपल इन द चैट बढ़िया. वेल इंडिया वाले यार, इंडिया वाले सुना नहीं है. लेकिन हाँ एब्सोल्युटली बैंगलोर जस्ट सो यू नो. अलोंसो स्टार शुड बी स्टार्टिंग. यार अलोंसो वुड बी स्टार्टिंग बट पता नहीं यार, दोनों ही क्वेश्चन मार्क. नहीं बाबा यार अलोंसो ही स्टार्ट करेगा. अलोंसो ही स्टार्ट करेगा. Yep, 100%. Let's go Atletico. I think most of the neutrals obviously would want Atletico just to make the tie interesting and of course, you know, something unpredictable हो. लेकिन anyway, let's see. Are you people watching the other one as well? आप लोग क्या टीवी पे देख रहे हो क्या? धेनुका बाबा? और मैं तो टीवी पे देख रहा हूँ. हाँ, मेरे यहाँ दोनों पे है. अरे मैं दूसरा चैनल ऐड करना ही भूल गया, वो करता हूँ. बेंफिका लिवरपूल का यार क्या कोई anyone is following Benfica Liverpool? Any Liverpool fans in the house? Do keep letting us know. Even we will also check it. I will switch between WhatsApp groups to check. Okay. Play Aspi at left wing back. नहीं यार. Why would you experiment so much all of a sudden? नहीं? हाँ, वो भी इतने बड़े गेम में. वो इसमें आ रहा है ना, Sony 10-1 में आ रहा है ना, Benfica Liverpool. इसमें देखने की कोशिश करो. FSG let's go by ref and VAR. अरे भाई ऑप्शन होता है यार, कब की सब ऑयल क्लब ले लेती है अभी तक नहीं. 1-1 draw. Okay, 2-1 Benfica win. Okay. Others in the chat, do let us know what is your prediction for the games tonight. And yes, again, people do like the stream. Do check out, you know, Bombay Penia's Insta handle is there, and of course, Drog Baba. Yeah, honestly, yeah, even if there's one person, do check it out. Who will be big loss, Aspilicueta or Rudiger if they go? Rudiger without a doubt, भाई. हाँ मतलब obviously footballing ability तो there's no option. Doubt ही नहीं है. Rudiger मतलब we can do without Aspilicueta, but right now we can't do without Rudiger. As simple as that. तो इस तरीके से क्वेश्चन का ये जवाब दे सकते हैं. इनफैक्ट इवन लीडरशिप में बोलोगे ना, क्योंकि ऑन द पिच रूडिगर इज आल्सो अ लीडर. तो आई थिंक ऑन बोथ द एस्पेक्ट्स यू आर राइट. एज एन यू नो ही इज लाइक टोटली इंडिस्पेंसेबल इन टर्म्स ऑफ वो पोजीशन भी जो खेलता है लेफ्ट बैक में या लेफ्ट सेंटर बैक कोई है भी नहीं ना अपने पास. मतलब क्रिस्टियनसन एक दो बार खेलता है बट ठीक है. So this is not Jali pe namak or anything, but is it confirmed that they are both going? नहीं, एस्पिलिक्वेटा तो रुक रहा है, उसका ट्रिगर हो गया है जो क्लॉज था. At least for time he can still be sold, लेकिन मतलब he won't be free agent, ये वाली बात. Yeah. लेकिन क्रिस्टियनसन का ना like Aspilicueta also to Barca and अंकित भाई उससे ड्रॉग बाबा नेटिव प्लेस. भाई मेरा नेटिव प्लेस भी राजस्थानी है, जस्ट सो यू नो. झुंझुनू से हो ना भैया. हाँ एग्जैक्टली. बाबा आपके पीछे का मिरर पे मैच नहीं दिख रहा है. ओ मैन साइड में हो जाऊं क्या? कॉपीराइट काम कर रहा हूं उसमें बेंफिका वाला मैच लगा दो. उस स्ट्रीम में देख रहे थे हम, आरसीबी का मैच चल रहा था राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, पिछले वाले स्ट्रीम में. हाँ आई थिंक देयर वर कमेंट्स सेइंग कि अरे बढ़िया अरे हो गया कि अरे फाउल अगेंस्ट सिटी.
भाई आकी मैंने कहा ना अंकित भैया थोड़ा सा शेकी है। हाँ आई डोंट नो, वो कॉन्फिडेंस चीज है क्या? ये डच नेशनल टीम के लिए तो काफी अच्छा खेल रहा है यार, सिटी के साइड में पता नहीं क्या हो जाता है उसको। वही है क्या, व्हेन यू हैव द सुपरस्टार प्लेयर्स नेक्स्ट टू यू राइट, इट्स काइंड ऑफ बाउंड टू हैपन। वही है, वर्नर का दिख रहा है ना अपने को। वर्नर क्या तो कंपेयर कर क्या दिया। ही बोले वर्नर के लिए तो। We're gonna defeat Chelsea then City. Okay, let's see. Rudiger Barca नहीं आ रहा। Okay, if that's a statement, it's wonderful. लेकिन I think अभी तक decide नहीं है, as per what I know. हाँ It's too early to call. YouTube खोलो, क्योंकि मैं भी एक मैड्रिड फैन हूँ, तो अच्छा लगेगा आपके चैनल पे। ओके यार, भाई आप हमारे चैनल पे भी वेलकम हो सुभाजीत। Just saying. Ankit, a big fan. Yes, absolutely. I'm a fan of you all as well, everyone watching. And of course, yeah, people, in case आपने नहीं check किया है, do check out Bombay Penia, their Insta handle, and of course, Baba, तो आप, in case नहीं पता तो, Chelsea also need around 3 to 4 भाई players in summer चेल्सी transfer नीड्स अ window. न्यू ओनर सबसे पहले। बाकी सब चीजें भूल जाओ तुम, ओनर चाहिए अभी हमको सबसे पहले। अच्छा, did Llorente get any? He didn't get carded ना for that? Foul तो नहीं था ना वो? कार्ड तो नहीं मिला। चलो मैं दूसरा मैच भी लगाता हूँ बीच में अभी, लेकिन यार पीपल आपको चाहिएगा ये ग्राफिक दिखाता है वेबसाइट, बट आई थिंक उसमें हम बहुत छोटे हो जाते हैं यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई एम वंडरिंग लाइक शुड आई शो इट और नॉट। चलो, चहल इज मोर पॉपुलर देन कंबाइंड आरआर टीम ऑन सोशल मीडिया। यार आरआर सोशल मीडिया लाइक अलग ही लेवल है भाई यार, आई एम अ फैन ऑफ आरआर सोशल मीडिया। मगवायर इज इक्वल टू आके प्लेज एवरी गेम। आई डोंट नो मन, मतलब क्या लगता है बाबा, लाइक दिस इज कंपैरिजन फेयर? नहीं मतलब यार आके तो मेन स्टे नहीं है ना सिटी की टीम का, ही इज नॉट अ स्टार्टर। यप तो वो वाली चीज है, तो मगवायर से कैसे। ओ यार, दिस इज न्यूज़ बाय द वे। हाँ, अभी देखा मैंने फेब्रिशियो का ट्वीट शायद हाँ, था। Araujo has Araujo। renewed, yeah, correct. तो आई डोंट नो यार, धेनुका बारसा इज कमिंग फॉर मैड्रिड नेक्स्ट सीजन। Absolutely. We don't reinforce, we are getting totally like plowed. Unka they've been building a really good team for some time now, and it's like with Xavi as the coach, it's just clicked so well. So अब मेरे को पता चला, मुझे ना मैच दिख क्यों नहीं रहा है ठीक से। लगाते हैं। ओ क्लार्क कैंट ही सुपरमैन है, गंगाधरी शक्ति। ओके, नूनेज यूनाइटेड आ जाए तो अच्छा फिट होगा यार। आई थिंक इफ यू आर टॉकिंग अबाउट डार्विन नूनेज, बारसा के साथ लेटेस्ट हुआ है लिंक बिटवीन हिम एंड लेवेंडोव्स्की इज व्हाट आई अंडरस्टैंड। लेट्स सी वेयर ही गोस। लेकिन कैन चेल्सी अफोर्ड मैड्रिड ट्रिप, या मैड्रिड के साथ प्लेन के में बैठ के जाएंगे? आई थिंक 30 मिनट डाला है क्या बाबा, वो जो दिया था अजीब सा परमिशन रोमन को और डालने के लिए? क्या पता अभी क्यों ही तो डालेगा वो पैसा। और लाइक आई नो ही लव्स चेल्सी, बट यार 30 मिनट ऐसे बोले 30 रुपए है। हाँ, 30 मिनट डाल सकते, चलो। बट आई थिंक सॉर्टेड फॉर नाउ, इट्स सॉर्टेड। That's what reports said. यार मैं तो चाह रहा हूँ जो भी है अब ओनरशिप जल्दी आए यार, नई ओनरशिप। तो एटलीस्ट हम मतलब प्रिपेयर तो करें अपने आप को कि हमें एकेडमी से बंदे लाने हैं, कि हमारे ओनर्स ले आएंगे नए प्लेयर्स ट्रांसफर मार्केट से। उस सेंस में तो चीजें क्लियर हो। टेड बोली मेरे को लग रहा है कि आना चाहिए। हाँ, मतलब टेड बोली सबका है, नो टू रिकेट्स इतना स्ट्रांगली है, बट अगेन वो डिबेट है ना कि अगर वो रिकेट्स फैमिली को मेजर स्टेक होल्डरशिप नहीं मिलती, फिलिप्स से अकेले ही जा रहा था, लेकिन 4 to 5 सिटी डिफेंडर्स वर देयर। बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, लाइक यू नो, अगर बाय चांस रिकेट्स को नहीं मिलती है एनी डिसीजन मेकिंग, तो आई बिलीव ज्यादा इन्वेस्टर्स उनके साथ जा रहे हैं अभी फॉर सम रीजन। वो ही जाने, मतलब मे बी इट्स यू नो ब्रूस बक डूइंग व्हाट ही इज डूइंग। But yeah, theory of Werner offside on most occasions because he's faster than the ball, never such talent. good theory यार, मतलब that is what optimism is, definition of optimism सच में बोलो तो। but अच्छा है। बचे। अरे भाई कैंसर होता ना फर्स्ट सिटी थ्रेट। हाँ, अब तो और वो नेचुरली राइट है ना, वो तो और वैसी बॉल्स डालेगा।
ये देखो धेनुका, I'll give you this question. Klopp without specs or Guardiola with hair? Neither. यार वो एलिमेंट ही चल जाएगा उनका, बेसिकली their USP is what they are, right? नहीं, I'm क्लॉप तो trying क्या to imagine and I can't. That's the thing. मैं कोशिश कर रही अरे हूँ मतलब क्लॉप का हुआ to था, get a एक बार क्या visual. हुआ था ना, वो कुछ ज्यादा ही सेलिब्रेशन कर लिया था तो चश्मा टूट गया था। I don't know if you remember. He नहीं, actually अभी celebrated. अभी हाँ क्लॉप कुछ मैचेस में आता तो है बिना चश्मे के। हाँ exactly. but Yeah, I think Dhenuka का आंसर भी neither of them है. Looks like it. Klopp without specs maybe. Guardiola without hair, with hair is very weird to imagine even. देखते But हैं यार, he मतलब I think Conte भी बिग फैन था ना बाबा। अब तो ट्रांसप्लांट करा लिया होगा शायद। अच्छा ट्रांसप्लांट कर रहे थे, अच्छा मतलब इनिशियली वही मतलब देयर वर लॉट ऑफ स्टोरीज है, आई रिमेंबर मीम्स चल रहे थे। अच्छा लेवा का अच्छा चांस है तो वो बारसा यार, लेवेंडोव्स्की बार्सिलोना डिसेंट वही है, लेकिन ओबामेयांग का क्या होगा यार, मतलब फाइनली आया है। सब प्लेयर्स लिंक हो रहे हैं अभी तो बारसा से, अभी तो क्रिसमस सीजन चल रहा है। शॉपिंग स्प्री पे है बार्सिलोना भाई। यहाँ पर सिटी आराम से यार दो पोजीशन मेंटेन कर रही है ऑलरेडी, 10 पीपल लाइक 11 पीपल बिहाइंड द बॉल। एटलेटिको दूसरे मैच में क्या हो रहा है देखते हैं उसमें। ओहो भाई, सिटी इज गेटिंग बिहाइंड एटलेटिकोस डिफेंसिव लाइंस वेरी इजीली। एक बॉल पिंग कर रहे हैं ऊपर से और उनकी बैक चैनल्स खुल जा रही हैं बड़ी आराम से। दूसरी तीसरी बार हो गया इतनी सी देर में। अगर यही चलता रहा तो इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर सिटी स्कोर। रहीम स्टर्लिंग है ना उनका मेन आज ऊपर। वाचिंग लोरेंटे इज सो फ्रस्ट्रेटिंग, मतलब यार फोर्डन नहीं खेल रहा ना? नहीं फोर्डन नहीं है आज, सिल्वा और मारेस बिसाइड स्टर्लिंग। सो फोर्डन आएगा सेकंड हाफ में आएगा, अभी तो खैर नहीं है। ओके 3 to 4 players येलो पर है एटलेटिको के, इफ दे गेट येलो टुडे विल बी सस्पेंडेड सेकंड लेग। ओके इंटरेस्टिंग। I think Atletico, yeah, again, Jimenez missing is itself is a huge miss for them. huge. Yeah, exactly. मुझे कुछ दिखाई नहीं दे मैं वैसे ही था एकदम भाई। मैं अरे फिर से वही चीज डायगोनल्स आ रहे हैं। I don't wear it. Big up Almighty Blues. Okay, people, Man United agenda in the house. Check them out. Very good channel. Man United agenda. ओहो डे ब्रुयना, ओ अरे मैच देखो भैया, खतरनाक खेल रही है सिटी। अरे ऑलरेडी It's only a matter of time. Yeah, it's like they ऐसे तो लग रहा है इट्स ओनली अ मैटर ऑफ टाइम बिफोर दे स्कोर, ऐसे ही चलता है। वही वो गुंडोगन का लगा क्या? ब्लॉक हुआ है शायद। ये क्या अश्नीर गोवर्स इंटरेस्टेड फॉर चेल्सी? इसे दोगलापन सुनाई देगा मुझे तो फिर। बॉल लपोर्ट। अरे एटलेटिको नहीं कर पाएगी सर्वाइव, दे हैव टू डू समथिंग एल्स। दिस वे इज लाइक इमेजिन देम 180 मिनट्स लाइक दिस, राइट? फिलिक्स सिटी में आ जाए, हालैंड नहीं आता। ओ फिर आई थिंक फिलिक्स कैन बी अ गुड फिट ना, द वे ही प्लेज। for whom? सिटी सिटी हाँ। ये तो मिलने वाली थी, मैड्रिड नहीं आएगा। Okay, people tackle from behind in the house. Big up to tackle from behind. Check करो उनको भी। रमदान मारिस is a different gravy. हाँ, actually good point. आज काफी लोग हैं ना फास्ट पे, तो आई थिंक रमदान है एंड आई थिंक कल चेल्सी के लिए भी होंगे कांटे एंड को। कांटे, रुडिगर, जीएच। आई थिंक लास्ट सीजन भी वही था ना, दे स्टिल ही गॉट मैन ऑफ द मैच, वो स्टोरी बना था। ओहो स्टर्लिंग भाई, स्टर्लिंग भाई, अरे भाई फाड़ के निकल गया स्टर्लिंग यार डिफेंस को। क्या किया भाई, ब्रिलियंट। वर्साल्को को समझ ही नहीं आया क्या हुआ। अरे उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? आई टिल नो मुझे पता ही नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं। हाँ वर्साल्को। हाँ चलो इजी है भाई, थैंक्स। मुझे रियल मैड्रिड पसंद है, पर एटलेटिको मैड्रिड देखने में मजा तो आता है। हाँ मतलब ड्रामा मिलता है ना,
एटलेटिको मैड्रिड। न्यूट्रल, हाँ, if you're a neutral fan तो मजा ही आएगा। अरे वो लास्ट Frustrating ग्रुप गेम जो होंगे था, क्या? वो टिपिकल डार्क आर्ट्स वाला गेम जो था, लास्ट ग्रुप गेम वेयर दे क्वालिफाइड, दे गॉट अ रेड कार्ड फॉर द ऑपोजिशन। अरे भाई वो दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ हाउ यू गेट अ रेड कार्ड फॉर द ऑपोजिशन। इनफैक्ट इवन रियल मैड्रिड ना, मिलिटाओ, he made sure Nico Barella got a red card. Even that was like coming. Yeah. भाई कोके ने क्या टैकल मारा बर्नार्डो को यार, पैर घुमा के बिल्कुल। या बट स्टर्लिंग अगर जाता ना एक और स्टेप आगे, पेनल्टी होना था। अरे रे 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 बैक से बिल्डअप, ये क्या कर रही है एटलेटिको? एटलेटिको डूइंग इन आर्सेनल, क्या कर रहे हो भाई? और कोई कॉन्डोक भी आ, इमेजिन। अरे अंकित भैया, आर्सेनल डिड इन आर्सेनल लास्ट नाइट। अरे आर्सेनल आर बैक, आर्सेनल आर इंडीड बैक, प्रॉपर है वो। एंड देन वो वेट कर रहे थे, मिस कर रहे थे, वी ऑल वर मिसिंग आर्सेनल। एंड देन लेट्स बी ऑनेस्ट, इवन आर्सेनल फैंस वर मिसिंग आर्सेनल, नहीं? Mosjito Barcelona, as Mark Tony said, yes, absolutely. Like even Baba said, right? Literally everyone Barca is going for अभी, लेकिन धेनुका टू बार्सिलोना हो जाएगा थोड़ा दिन। क्यों? वो तो इस जर्मनी होना सबसे लिंक हो रहे हैं वो। बाबा टू बार्सिलोना भी आया था, फब्रिजियो ने किया था। पर्सनल टर्म्स एग्री नहीं हुई वो तो मेरी और उनकी। इमेजिन किएसा टू मैड्रिड। यार किएसा इंटरेस्टिंग होगा ना आफ्टर इंजरी, देखते हैं व्हिच क्लब विल एक्चुअली गो फॉर हिम, बट अगेन वो शायद ही सेल करेंगे यार यूए। ही इज द प्राइस्ड एसेट। डिबाला इज गोइंग एज पर रिपोर्ट्स, एंड डिबाला आई डोंट नो, बाबा व्हाट डू यू थिंक डिबाला वेयर बेस्ट फिट क्या लगता है? यूनाइटेड? यार अजीब सा प्रोफाइल है डिबाला का। नॉट मेनी क्लब्स आर राइट नाउ लुकिंग फॉर अ प्लेयर लाइक डिबाला। लेकिन थोड़ा राइट साइडेड खेल सकता है ना वो, राइट साइडेड में यूनाइटेड को चाहिए। मतलब डिबाला इज अ प्लेयर हु डज नॉट सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स। करेक्ट। ये कुछ ज्यादा होगा। चेल्सी टू बार्सा फ्री ट्रांसफर। बिल्कुल भाई, टीम पे तो रेड मार ही दिया है, 3-4 प्लेयर तो लिंक हैं ही। I think this is a good point. It is a good point. लेकिन वही है ना, you have मोहम्मद साला उठा लो, मोहम्मद साला उठा लो। मोहम्मद साला को कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही है लिवरपूल। राइट विंग पे मोहम्मद साला, लेफ्ट पे एम्बापे, बीच में बेंजेमा। मजा आ जाएगा जिंदगी। तो विनी कहाँ जाएगा? विनी बैकअप लग्जरी। अरे भाई Galacticos part 2. He's had a half good season यार, that's it. नहीं अच्छा खेल रहा है विनी, बट यू नीड 3-4 प्लेयर्स ना रोटेशन में, जैसे लिवरपूल करती है। फर्मिनो, साला, जोटा, माने। एक जमाने में हमारे पास भी ऐसा बेंच था। नहीं है, लास्ट 3 सीजन से नहीं। अरे मैं वही कल बात कर रहा था, कोई तो मुझे बोल रहा था लुकाकू को आप कैसे बेंच पे रख सकते हो, हाउ डेयर यू। मैं लाइक व्हाट डू यू मीन मैन? माइकल ओवन आफ्टर विनिंग द बैलन डोर ऑल दैट, ही एट one point was a super sub for Madrid. Correct. And he was a good super sub. It's just that fact that 100 million pay किए तो people are talking so much, और social media world है। मतलब there are, I would say that Real Madrid was a different gravy altogether. नहीं, even Chelsea ना, Baba would remember ना, we had like Shevchenko on the bench all the time. Correct. Yeah, Shevchenko was on the bench. Torres यार Champions League final he came on, he won the corner of as a super sub. तो मतलब that what यार, what about this Dhenuka? Whom would you like to replace Kroos? See, बर्नार्डो सिल्वा और क्रूज का कोई कंपैरिजन है क्या? वो प्रोफाइल ही अलग है दोनों। And Kroos का मतलब I don't know who will fit the right profile, like the long passes and the crosses that he gets into. I don't know, it's very difficult to find a Kroos replacement, like एकदम plug-in replacement. केविन डी ब्रुयन नहीं आएगा। कहाँ गए? ओए बॉल है भाई। I don't know who will replace Kroos. मुझे ऐसा लगता है ना कि हमारा जो एक मिडफील्ड जैसा अभी सेट है ना, to plug and replace players, it is very difficult. Like it is very difficult to find a Casemiro replacement. It is very difficult to find a Kroos replacement. They all click together. तो अभी जो है, we have to find someone. Gundogan. Yeah. So I think there are certain players जो है ना, मतलब kind of unique है। मतलब talk about Busquets of Barcelona, Kroos of Madrid, right? Kante for Chelsea. Kante for Chelsea. Kante, exactly. Kante for Chelsea. They are in their own league. And the
if the midfield has to work together ना, तो वो पूरा वो setup ही है, वो अलग होना चाहिए. Like Kroos, like right now he's not working because of that low block that Carlos playing. तो उसमें वो effective ही नहीं है. तो that is the thing. You need that kind of the midfield to function properly with the tactics of the manager, and there are so many things. So it's not a direct plug replacement, I think. मुझे actually Casemiro का ज़्यादा tension आता है because it's very difficult to find a replacement for that guy. Rodri ले we'll have to हाँ Rodri ले लेना पेप के जाने के बाद यार one person जो सब कुछ कर सकता है ना De Bruyne चुआमेनी तो भाई मतलब he is the next big thing. Correct. So that's I think and I think उसको ही as a defensive midfielder अगर देखा जाए तो because Casemiro का भी it is I don't want to say regressing, but there are off games. He gets so many yellows. He misses out on so many matches. We definitely need a defensive midfielder क्योंकि वरना and हमारा जो Camavinga है, he has played as a defensive midfielder, but he's more typical DM नहीं है. Effective. I think he is more effective when he plays when he has more control and when he plays attacking. Not as a defensive. नहीं मेरे ख्याल से वर्ल्ड फुटबॉल ही चेंज हो रहा है टू बी ऑनेस्ट लाइक यू सी मतलब आप देखो बारसा भी दे हैव एक्सेप्टेड दैट्स व्हाई केसी आ रहा है टू बी ऑनेस्ट वो भी जाएंगे डबल पिवट ही जाएंगे एंड देन वन मैन इन फ्रंट ऑफ देम लेकिन यार हु विल फिट इजीली इन पेप सिस्टम हैरी केन और हालैंड हैरी केन नहीं बाबा व्हाट डू यू थिंक ही ड्रॉप्स इन एंड ऑल दैट ओह नाइस वन यार हैरी केन खेला है वो मरीनियो वाले सिस्टम में फॉल्स नहीं पीछे आता था वो सॉन को गेम में लेके आता था वो एग्जैक्टली हैरी केन इज आल्सो प्रीमियर लीग प्रूवन तो इट इज वेरी इजी फॉर अस टू से हैरी केन लेकिन ऐसी कोई एविडेंस नहीं है कि मैं हालैंड को बेटर मतलब हैरी केन को बेटर बोल दूं हालैंड से ऐसा कोई मेरे पास क्लियर एविडेंस भी नहीं है मतलब हालैंड ने ऐसा कुछ कम भी नहीं परफॉर्म किया तो हालैंड का मुझे सिर्फ इंजरीज इज माय ओनली थिंग मतलब मुझे ऐसे यार उसका हालैंड का क्या है ना ही इज प्लेड 2 सीजंस इन टॉप फ्लाइट और केन हैज बीन डूइंग दैट फॉर लास्ट 5-6 इयर्स तो बस सैंपल साइज बहुत कम है दोनों के कंपैरिजन करने के लिए तो वो अनफेयर है मेरे हिसाब से तो कंपैरिजन या फेयर इनफ एब्सोल्युटली यार दूसरा मैच अभी तक वही चल रहा है 0-0 अच्छा नहीं लिवरपूल गोल कर दिया अरे हमने मिस कर दिया इब्राहिमा कोनाटे हां पिटाई चालू हो गई पिटाई अरे भाई कोनाटे हेडर असिस्ट बाय एंड्रू रॉबर्टसन चलो सही है एनीवे तो गुड फॉर लिवरपूल फैंस मैन देन मैन सिटी के लिए तैयार होगी मतलब यू कैन आर्ग्यू दैट मैन सिटी के लिए लिवरपूल विल बी मोर रेडी इन केस वो एक और गोल कर लेती है दे विल बी एबल टू रेस्ट पीपल ना संडे को है ना मैच संडे को है मैन सिटी लिवरपूल चलो कोई तो आई थिंक इट नॉट बी टू बैड But Konate, I don't know. Like Baba, what do you think? मतलब Konate is that elite level defender एकदम? नहीं अभी टाइम लगेगा टाइम उसको अभी एकदम एलीट तो नहीं है वो और उपामेकानो दोनों को टाइम लगेगा अभी उपामेकानो पता नहीं है लाइक लिवरपूल तो आर्ग्यू करेगी वी गॉट द बेटर डिफेंडर क्योंकि वो तो ही इज काइंड ऑफ नॉट रियली सेटल्ड ना इन बायर्न तो probably वो ये एज का फैक्टर है और मे बी नॉट गिविंग मच चांसेस आई एम गेसिंग राइट Okay, if Atletico wins against Madrid, mark my word, UCL coming Madrid, Atletico वाला. well, अभी तो टाइम है खैर काफी टाइम है then first तो यार ये मैच जीत जाओ it's quite difficult going by how it's going लेकिन again things might change. Atletico win against Madrid in the league ऐसे अच्छा और against नहीं I think assuming they'll win this and Real Madrid will beat Chelsea in the UCL only okay that's what I understand if Valverde starts Real win he's the fast and class player यार Valverde El Clasico जाओ फिलिक्स कोई है नहीं यार कोई हाँ अर्ली क्रॉस करना था उसको कोई था नहीं उस समय यही मोमेंट्स पे कैपिटलाइज करना है एटलेटिको को यहाँ पर सुआरेज में भी मिस होगा जाओ फिलिक्स इज द मैंने कल भी यही बोला था दैट उसी पे बस और पता ही क्यों हुआ क्योंकि वॉकर नहीं है रिकवरी रन्स के लिए and this guy has been in like insane form तो ये इनको
मतलब अगर ये कुछ शिट हाउसरी करके 1-0 की लीड ले लेना चीप सी तो दिक्कत हो जाएगी सिटी को थोड़ी सी। ये देखो बाबा कमेंट आ गया। ओह एक सेकंड क्या कमेंट आया guys having 149 bank balance talking about Chelsea's financial situation। तो छोड़ यार, अभी धेनुका बैठी है मेरे मुंह से निकलने वाला था। मैं खुद अपने आप को रोक रहा हूँ यहाँ पर यार। ऐसे तो तुम भाई लाइफ में ना फिर क्या करो, खाना खाओ, अपना काम करो और घर पे आके सो जाओ। तुम किसी भी बारे में किसी से भी बात मत करो, तुम पॉलिटिक्स भी डिस्कस मत करो। हाउ कैन यू टॉक अबाउट तुम पॉलिटिक्स डिस्कस मत करो, तुम स्पोर्ट्स डिस्कस मत करो, तुम अपने रिलेशनशिप्स भी डिस्कस मत करो अपने दोस्तों के साथ, कुछ भी मत करो। तुम खाना खाओ, सो जाओ और लिव अ लाइफ लाइक अ रोबोट। But again, like, I hope you get the point. Yeah, okay. I don't know, yaar. Chiesa is good, yaar. I think he'll probably go to a top club. Nothing against Fiorentina and all that. Like, again, okay, Atletico रहेगा, City वरना से ज़्यादा. Okay. If Salah joins Madrid, कोलंबिया ने बॉडी कर दिया भाई, डी ब्रुयने। अरे स्ट्रेंथ है बंदे के पास, स्ट्रेंथ तो काफी है, बस वही है कि यार बॉडी क्या है, लेकिन as in terms of skill I'm not sure वो होल्ड जो कर रहा है ना against press he'll be beaten. Oh beautiful flick. Oh nice one, what a who was that? कोके। अरे यार अंडर हिट। अरे मार दिया। अरे यार लोडी था क्या? Renan Lodi has been the star of Atletico Madrid, yeah, in the Champions League, at least last 2 matches में. दोनों ही मैच में किया था ना शायद Renan Lodi against Manchester United. अरे 30% प्रोबेबिलिटी। सॉरी यार तुम बॉडी हो गए फालतू में। वो कह रहा है कि वो किसी और को बोल रहा था वो चीज। ओह अच्छा। सॉरी यार, पर मैं यार देख, मैं क्या जब बॉडी करता हूँ ना किसी को, तो वो भल्लाल देव का रथ होता है ना बाहुबली में, मैं वैसे निकलता हूँ। मैं देखता नहीं हूँ रास्ते में कौन आ रहा है, खच। मैं तो वेल लेफ्ट यार, इट्स लाइक टू मच। आपको पता है ये जो वर्ड जगरनॉट, हाँ जगन्नाथ उससे आया है वो इसी से। That's how it is. हाँ जगन्नाथ का जो मतलब वो हुआ था ना, वो जो ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग अनफॉर्चुनेटली स्टैम्पीड में they got trampled, हाँ, because it went out of control. So the word juggernaut comes from that, like an unstoppable force. Yep. हो गया इंग्लिश लेसन, हो गया आज का मैथ्स के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया। यार प्रॉपर क्लास चल रही है आज तो। निश्चल रॉय और ओवन यार, अगेन यार दोनों साथ में यार देखो क्या है, निश्चल रॉय वाज अ गुड पोचर, ओवन वाज अ गुड रनर बिहाइंड द लाइंस, मतलब वो वाला था वो, तो वही वाला दोनों साथ में होता तो ऑसम कॉम्बिनेशन, राइट? हां फिनिशर दोनों अच्छे थे, दोनों खेले रियल के लिए। आई थिंक स्ट्राइकर उस जमाने में क्या मतलब, आई डोंट नो, इट्स मोर अबाउट एक था ना, दे हैड लाइक सो मेनी गुड स्ट्राइकर्स अराउंड। यार अगेन निश्चल रॉय for Madrid, I don't know, Madrid के लिए was he like is he counted in that league? Where do you rank Nistel Roy for Madrid? Nistel Roy hardly played for Madrid, but he counted in the season that he was there. Yes, of course. But I think he probably could have moved earlier. Again, debatable. Lekin I think he was one who was always linked with all those big moves. See, I think उनका कैसे हुआ था ना कि when Beckham left, it was very controversial, right? That whole fallout with Sir Alex happened, and then उसके बाद when he came here, then Ruud van became like the poster boy for United at that time. तो वो साथ तो कहीं नहीं गया because he was the way they marketed him. उसके बाद Cristiano Ronaldo आ गया, so then Mr. Roy came here, and so they had CR7 Man United as their. तो I think उस टाइम पे तो वो इमीडिएटली नहीं निकल पाया, एटलीस्ट फॉर मैड्रिड ही डिडंट कम बिकॉज़ ही वाज लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड का पोस्टर बॉय फॉर दैट सीजन आई थिंक। अरे यार फिलिक्स कितना सिल्की है यार, बढ़िया प्लेयर है यार, इसको प्रीमियर लीग में लाओ। आई एम टेलिंग यू सच में फिलिक्स इज मेरा फेवरेट है। गलत टीम में फंस गया यार, ये रजिया गुंडों में फंस गई। अरे वो सिमियोने क्या बोलता है, मेरे पास पेप जैसे प्लेयर्स नहीं थे भाई, मतलब तेरे पास है भी तो क्या किया तूने फिलिक्स के साथ? have to be very honest about it, right? Joao Felix even national team के लिए जब भी खेलता है, he's really good, he's one of my favorites. ये मारो भाई, गिराया उसको, स्लिप वॉकिंग क्या पता नहीं, लेकिन पता है एक स्टोरी है ना अंकित भैया की, 10 साल के 2 बच्चे चेल्सी एकेडमी में ट्रायल देने आए थे 9-10 सीजन में,
तो चेल्सी के पास सिर्फ ये था कि दोनों में से किसी एक को ही साइन कर सकते हैं। तो एक था डोमिनिक सोलंके और दूसरा था किलियन एम्बापे। हाँ, एग्जैक्टली। तो दे साइन डोमिनिक सोलंके इंस्टेड, ठीक है। डेस्टिनी। और एक बंदे ने उस थ्रेड पे कमेंट किया था, बोलता है अच्छा एम्बापे मोनाको चला गया वरना अभी क्रिस्टल पैलेस के लिए राइट बैक खेल रहा होता। यार पुलिसिक में देख लो क्या हो रहा है चेल्सी में, एक ही मैच में खेलता है फॉरवर्ड, नेक्स्ट सेकंड में राइट बैक हो जाता है। बोले लोन पे भी क्रिस्टल पैलेस में होता घूम रहा होता इधर उधर। क्वाइट पॉसिबल एक्चुअली, गुड वन। यार आपको लगता है कॉनर गैलेगर को इंटीग्रेट करेंगे हम सीजन? 100%, कोई डाउट ही नहीं है। मोर देन मतलब गैलेगर तो ऐसा बंदा है यार, मेरे को पैसे मत दो, मैं चेल्सी के लिए खेलूंगा। ही लव्स चेल्सी सो मच, इवन मोर देन मेसन माउंट। इफ यू फॉलो सोशल मीडिया, यार वो थोड़ा मतलब देख के उसको मतलब डेविड लुइस वाली टेनेसिटी आती है उसमें देख के। मतलब डेविड लुइस में जो वो थी ना एक आग, हाँ इनिशियल की यार, वो आते ही वो हो गया था, राइट, याद है मुझे। वो चीज दिखती है मेरे को उसमें, उसके थोड़े मतलब मैनरिज्म्स और वो सब, और वर्क रेट उसके साथ में, मतलब मैं वो क्वालिटी नहीं बोल रहा हूँ डेविड लुइस वाली, मतलब एक डेविड लुइस में एक आग थी जब वो आया था शुरू में, उस तरीके की लगती है मुझे। अरे वो मैच याद होगा ना अगेंस्ट, अरे स्टर्लिंग बीट किया नहीं। अरे बढ़िया यार एटलेटिको आर डूइंग एन एटलेटिको राइट नाउ। अरे Dhenuka, your Nico Barreira does not play so deep from what I know. He likes to actually advance. His natural tendency, or he's not a passer. He's not really that passer that cruises. So it's a different genre altogether. Lekin again, great player. Absolutely. Modric के जगह Kroos, I think maybe you can say that Barella, if he goes, in case जाता है, तो they'll probably change their setup. वो ला सकते हो Modric की जगह Kroos, that's what. Actually वही है, Modric की जगह पे ना we have quite a few replacements. अरे that's it's Kroos, Casemiro, जो the kind of वो जो aerial crosses and long passes and everything, वो मुश्किल है। And Casemiro का is very I don't think there is anyone who plays like Casemiro anywhere in world football. I'm not talking about like that overwhelming talent or anything, I'm just saying the kind of play. Fair enough. There's no one compared to Maguire at MUFC. He's just different gravy. मतलब what he's at MUFC? भाई पता है क्या हो रहा है आज के जो टाइम में हम रहते हैं ना, सोशल मीडिया के दौर में, हर कोई प्लेयर ना मेंटली, हर कोई प्लेयर इतना स्ट्रांग नहीं होता है मेंटली। तो ये ना सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय कर रहे हैं करियर हैरी मैगवायर को धीरे धीरे, बिट बाय बिट। जो फिल जोन्स के साथ हुआ था ना, वो हैरी मैगवायर के साथ हो जाएगा। ही विल फिनिश। अरे क्या मिस्टेक हो गया क्या? अरे भाई जाओ फिलिक्स यार, क्या कर रहा है भाई? 2-footed टैकल, लंज बिल्कुल। थोड़ा सा ही took it easy for a second ना, and then यार मतलब honestly मैच में it's like total one sided हो रहा है, unless वो counter attack करे तो we are just kind of taking यार बिल्कुल वही मैच हो रहा है जो हमने एक्सपेक्ट किया था exactly वही हो रहा है। हाँ, तो इसलिए कुछ है नहीं इसमें। फ्यूचर मैड्रिड ट्रायो 0-0 मान लो चला जाता है ना, विल बी एन एब्सोल्युटली क्रेजी रिजल्ट फॉर एटलेटिको। या एग्री। चलो ये बार कमेंट आ रहे, जैसे तैसे करके एटलेटिको मैड्रिड सिटी को हरा दे और सेमी में चेल्सी और एटलेटिको मैड्रिड होगा। एटलेटिको मैड्रिड इजी रहेगा सिटी से, वरना और फिर वहां पे विलारियल म्यूनिक को हरा दे और बेनफिका लिवरपूल को हरा दे और फिर विलारियल वर्सेस चेल्सी फाइनल हो जाए। ऐसे थोड़ी होता है यार। एक्चुअली ऑलमोस्ट हुआ भी था बाबा 2004 में मोनाको। मोनाको और चेल्सी का फाइनल। वो पोर्तो और चेल्सी का फाइनल हुआ था। वो यही मोनाको और चेल्सी का सेमीफाइनल हुआ था, पोर्तो और मोनाको का फाइनल हुआ था। डेपोर्टिवो और पोर्टो। No one saw that coming. Exactly. ओ यार जल्दी कर दो भाई, थोड़ा स्पीड स्लो है। we'll do it for sure. बर्नार्डो, स्टर्लिंग यार वॉच अलोंग तो नहीं करेंगे, लेकिन ओ रॉड्री, ओए मुंह पे पड़ गई भाई। कोके था, कौन था? सैवेज था। I have switched to watching on the phone actually, क्योंकि ऐसे वो देखने से it is easier to watch. Okay. फिर पीछे चलेगा फोन में आपका थोड़ा सा, मुझे लगता है। हाँ थोड़ा लैग। 2 seconds. क्या आपका टाइम स्टैम्प क्या है? for me 33:07.
हाँ मेरा 32-51. हाँ तो वही 30 सेकंड्स का 20 सेकंड्स का रहता है. मैं भी भाई थोड़ा मैच वैच देख रहा हूँ बीच बीच में, इसलिए कमेंट्स थोड़ा धीरे लिए हो, लेकिन हाँ विल गो थ्रू मोर कमेंट्स अगर कुछ क्वेश्चन तो फॉर श्योर. अरे भाई यार तुम जनवरी में वो बंदा आया है, अभी 3 महीने उसको खेलते हुए हैं यार. तुम I टीमो like वर्नर Ferran. के टीमो वर्नर होता तुम्हारी टीम में, तुम तो भाई उसको उसका इंस्टाग्राम पे डीएम कर करके उसकी ऐसी तैसी कर देते. नहीं ये मतलब he is a player man, he is a player and half. He's to a be really honest. good player, and he plays Exactly. like when I've seen him play for Spain also, like he's a really good player. भाई विनीशियस भी तो कितने चांसेस मिस कर रहा था लास्ट सीजन. अभी अरे ये वो देखो तो ना, अलग ही, मतलब इंसान ही अलग था, like a completely different player only last season. हाँ मतलब मैं पूछा था, is it Except Ancelotti effect? for you one think? game against Liverpool. Huh? Sorry. Is it Ancelotti effect, Vinicius, like what, or Benzema and him becoming friends again? नहीं वो friends again की तो मतलब I don't think initially they would Own have goal, not been friends. क्या बोला था वो कि he's wanting to score for the I other swear team or on my something. mother, he's playing for the He's passing to them, playing for the हाँ. other team. Yeah. Oh my God. Yeah. नहीं, I लेकिन- think बहुत सारी चीजें हैं. First of all, I think the like अरे we क्या all कर know रहा है? Carlos. तो करता ही है ये. ये चमक देता है, बस स्टाइल है उसका, मिस्टर एडिसन. मतलब उसको वो तो ऑलमोस्ट यार 11th प्लेयर इन फील्ड ही है, आई वुड से. एथलेटिको डिफेंसिव अप्रोच पता नहीं है बाबा, व्हाट डू यू थिंक एथलेटिको व्हिच मैनेजर शुड दे गो फॉर, अगर छोड़ता है कभी ना कभी शॉन डाइश. ऑलरेडी बेचारों को मिला हुआ है कि यू नो अमीरों का शॉन डाइश मिला है और गरीबों को मिल जाएगा, लेकिन I think Conte might like a faithful. that's a good Conte shout. is a good shout. Good shout. Conte good is a shout. really good shout. Absolutely. Okay. नहीं यार. हाँ. क्या ये अमेरिका had more bloods on their hand compared to क्या? Oh my I think God. this is अरे यार अब ये तो क्या पॉलिटिकल बात डिस्कस कर रहे हैं इधर. ओए Felix passing. I think Felix is kind of भाई उसको टाइम नहीं मिल रहा ना बॉल पे यार. अकेला पड़ गया बेचारा. time मिल रहा है, and he's the only one who's doing something. Yeah, वही है. Who's able to. उनका नहीं है ना कि एक्स को धीरे दबा दिया और तेज दबा दिया तो जितनी बॉल जाएगी तेजी से उतनी चली जाएगी. रियल लाइफ है. अरे नहीं भाई, गैलेगर तो रोमा नहीं हो रहा है. जो गैलेगर जोसे तो मोरिन्हो है रोमा- ना वहाँ, इसलिए वो रिपोर्ट है और कुछ नहीं है रीजन. टैनी है, सब लोग वहाँ है ना, वो लेजी जर्नलिज्म इसको बोलते हैं, to be very honest. Laporta likes Felix a lot and deal was closed last summer. Liverpool scored again क्या? ये क्या Salah is like high-fiving Trent. अरे हाँ, गुड वन. Yep. अरे भाई Mane I think. ओह, साडियो माने असिस्ट पे लुइस डियाज. पिटाई हो रही है भाई, पिटाई हो रही है. मैंने बोला ही था पिटाई हो गई. वो तो खत्म ही हो गया, मतलब एक और गोल और they'll be done. okay. They'll be done for the tie. नहीं? अरे it was a क्या assist this was. Yeah. मैं दूसरा मैच एक्चुअली वो ये ऑडियो बंद रखा है ना, तो मैं एक्चुअली मिस कर दिया वो. Same. I just happened to switch at the right time. हाँ, वो दूसरा विंडो में है हाँ. मेरा भी, तो कोई नहीं, देखते हो आप रिप्ले. लेकिन एनीवन इन द हाउस, कोई लिवरपूल फैन है घर पे? बोलो यार कोई. एज एन अगेन इट्स लाइक सिटी, मुझे तो लग रहा है लिवरपूल ले जाएगी, एक तो टाइटल ले जाएगी. कौन सा? आई डोंट नो, लाइक व्हाट डू यू गाइस थिंक पैनल में? City. सिटी और लिवरपूल में से सिटी, लिवरपूल एटलीस्ट विल टेक वन बिग टाइटल. I have a feeling this particular. बढ़िया. But they already took a big title. Offside. Offside. अरे हाँ, मतलब एक ऑलरेडी ले लिया है, which is something that we gave them rather than. मैं तो बोलना चाहूँगा. I saw that. Absolutely. वो हाँ, right. I actually saw that with Madrid people. Okay. क्योंकि हमारा उस दिन एक ये था, टूर्नामेंट था, and then we were all like penalty shootout साथ में देखा हमने. Nice. Okay, तो हो गया था. Why United pay 80 for Maguire? Because they are United. Leicester में और बेस्ट डिफेंडर था किया वो EPL में यूनाइटेड एंड से पहले वाले सीजन में. वेल लेस्टर हल सिटी के लिए काफी अच्छा था. आई वोंट डिनाई, हल सिटी के लिए आई थिंक ही वाज एक्चुअली गुड. मतलब आई नो हल सिटी नॉट डू वेल एज अ टीम,
but I think that is one of the reasons, along with of course जो हुआ था internationally for him, his price automatically went up. हल सिटी ने 2 बहुत अच्छे डिफेंडर निकाले थे, एंड्रू रॉबर्टसन और हैरी मैगवायर, दोनों एक टाइम पे छोड़ के गए थे टीम को. एंड्रू रॉबर्टसन वेंट फॉर 7 million टू लिवरपूल और हैरी मैगवायर लेस्टर आया था. और मतलब हैरी मैगवायर वाज बीइंग टाउटेड एज दिस नेक्स्ट बिग थिंग. अब नहीं वर्कआउट किया तो नहीं किया, हो गया. लेकिन मेरे ख्याल से अभी भी आई हैव अ फीलिंग 3 at the back system will suit him more. He cannot defend in 4 at the back. इतना खराब नहीं है वो यार, वो थोड़ा है, वो फैंस भी ओवर वो करते हैं, उसको बैक करो ना यार थोड़ा. मतलब मैं तो ये देखता हूँ कि बैक ही नहीं करते हैं फैंस प्लेयर, स्पेशली इंग्लिश फैंस ना, बिकॉज इट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज, क्योंकि इंग्लैंड के लिए यार वो जो किया था यूरोज में, ही वाज वन ऑफ द टॉप डिफेंडर्स प्रॉब्ली, राइट? तो आप उसको नहीं बैक करोगे, थोड़ा सा स्ट्रेंज है. लेकिन वही है यार, सिस्टम की बात आ जाती है इन टर्म्स ऑफ व्हाट आई थिंक. मैन सिटीज बॉल पोजीशन इज बेटर देन मी एंड माय फ्रेंड्स बोर्ड परसेंटेज. मतलब या तो आपका परसेंटेज तो बहुत ही अच्छा है, या तो मतलब यू नो मैन सिटी इज आउट ऑफ द वर्ल्ड. ये एकदम सटल फ्लेक्स है. One player from Barcelona 2009-10 team you would have loved to see at Chelsea except Messi. यार 9-10 बड़ा वियर्ड है. मतलब 8-9 पूछते हैं या 9-10 या 10-11 पूछते हैं. 9-10 क्यों है? इनिएस्टा तो था ना उस समय. अब दोनों सीजन 8-9 और 10-11 में बारसा ने चैंपियंस लीग जीती थी. 9-10 में दे वर नॉक्ड आउट बाय इंटर, वो याद है? मरीनो इंटर. अरे क्या सेलिब्रेशन मैन, लव्ड द सेलिब्रेशन. टैक्टिकल मास्टर क्लास थी. दैट वाज पीक जोसे. अरे डाइव था ना. डाइव था. दैट वाज पीक जोसे मरीनो. भाई ऑल ऑफ देम एक्सेप्ट विक्टर वाल्डेस. और इसलिए नहीं क्योंकि विक्टर वाल्डेस खराब गोलकीपर था, बिकॉज आई थिंक हमारे पास क्या बोलते हैं, पीटर चेक थे तो कोई दिक्कत नहीं थी. बाकी मतलब हु वुड नॉट लव अ प्लेयर लाइक से याया टूरे, इनिएस्टा, चावी, इब्राहिमोविच, अगर आप 9-10 की बात कर रहे हैं तो. एक्चुअली वो मे बी डिफाइनिंग मूव वही था इब्राहिमोविच का जो था ना. दे काइंड ऑफ इट बैकफायर्ड फॉर देम. लेकिन अगेन हाइंडसाइट इज ब्यूटीफुल थिंग. बायर्न वर्सेस लिवरपूल, इब्राहिमोविच ने भी काफी गोल स्कोर करे थे यार उनके लिए. वही है मतलब एक्सपेक्टेशन वर्सेस जो किया था, मतलब इन टर्म्स ऑफ गेम प्ले पता नहीं. और ऑफ पिच आई थिंक ही डिडंट गेट अलोंग विद Guardiola from what I hear. Dhenuka, what do you think, Bayern versus Liverpool? Who's gonna win? कल हमने डिस्कस किया था, बट money on Liverpool. लिवरपूल, राइट बाबा? Bayern थोड़ा डिफेंसिवली कंट्रोल है. लिवरपूल में बायर्न. चलो ऑलरेडी 2 आ गए आंसर्स, तो आई थिंक दैट विल बी इंटरेस्टिंग. लेकिन आई थिंक लिवरपूल जो जीती थी ना बायर्न के साथ 2 साल पहले, आई थिंक 2 साल पहले था, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब वो निको कोवाच था बायर्न का कोच. उस समय आई थिंक दैट वाज अ डिफरेंट बायर्न ऑल टुगेदर. अभी आपको अलग से स्पेशली मिलेगा. या आई थिंक ऑलमोस्ट 3 years हो गए इन फैक्ट. तो आई थिंक नाउ यू कैन एक्सपेक्ट अ प्रॉपर गेम. लेकिन टॉकिंग अबाउट इब्राहिमोविच, इन 2009 बार्सिलोना पेड 59 million pounds प्लस सैमुअल एटो. ओह यस. 2009 की बात कर रहा हूँ मैं. ये मैंने OMI में क्वेश्चन रखा था, मतलब एक क्लू रखा था लास्ट टाइम. अच्छा. कि यार दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, मतलब वन ऑफ द थिंग्स दैट नो टोटल बैकफायर जो बोलते हैं. कितना महंगा ट्रांसफर है भाई, 59 million प्लस सैमुअल एटो. राइट. उसने बोल दिया था गार्डियोला हैज नो बॉल्स, ऐसा कुछ बोल दिया था ना उसने. मेसी को उसको सेंट्रल लीग लाना है. Honestly man, as in once he retires, अभी of course very sad of Louis van Gaal also. वो जो कैरेक्टर्स होते हैं ना गेम में, they bring a different element यार. मतलब we miss them certainly. Guys, just asking which last player hyped by English media turned out good except Kane. यार Phil Foden and Mason Mount are on their way. Mason Mount तो मतलब it's really mixed, right? But लेकिन I agree, like you know, absolutely they are probably the next big thing when it comes to the media. जैक ग्रिलिश यार, क्या लग्जरी साइनिंग करी थी सिटी ने 100 million की. वो देखा है क्या वो वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई?
हाँ तो उसमें कंगना रनौत की शूटिंग चल रही होती है, तो उसको कुछ मिलता नहीं है ना, तो वो एक वो अमरूद खरीद के ले जाता है उसको 400 रुपए का। हाँ तो कहता राइट है कुछ महंगा नहीं मिला तो सस्ते कोई महंगा खरीद के ले आया। क्या एनालॉजी है वाह, अमेजिंग। बाबा ओपी इन द हाउस मैन, दैट इज अ गुड वन। तो वो जैक ग्रिलिश भी वही है, मतलब ही इज अ गुड प्लेयर बट 100 मिलियन का तो कहीं से भी नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। बाबा कभी पुणे आओ, आपकी खातिरदारी करेंगे। बिल्कुल भाई, मैं था पुणे वैसे 1-1.5 साल तालेगांव में। मतलब पुणे नहीं है, तालेगांव एग्जैक्टली, थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में हो गया। मैं वहाँ था क्या, मगरपट्टा। अच्छा, अमन और अमन मैं और वाकड़, हम लोग सब अलग अलग। वाकड़ से तो बस पकड़ता था मैं बैंगलोर की। सब लोगों को वाकड़ इसीलिए पता है। सेल ग्रिलिश टू यूवेंटस, पिंपरी चिंचवड़ पिंपरी, वो लोकल ट्रेन बड़ी मस्त होती है पुणे की, बहुत कन्वीनियंट रहती है। हाँ लोकल एक्चुअली मैं जहाँ रहता था ना वहाँ थी, वहाँ ट्रेन नहीं है, मतलब जो, हाँ मतलब इट्स अ प्रॉपर ऑलमोस्ट इंटरसिटी को आप बोल दो। हाँ वही मतलब आउटस्कर्ट्स में। उस साइड था, मगरपट्टा के साइड में यू हैव रेलवे ट्रैक्स एंड आई थिंक एक स्टेशन भी था। सेल ग्रिलिश टू यूवेंटस, लेफ्ट पे ग्रिलिश, व्लाहोविच सेंटर फॉरवर्ड की, ऐसा राइट विंग। करियर मोड खेल रहे हो क्या फीफा में? लिटरली मैं वही सोच रहा था। और मतलब यूवेंटस को सिटी इसलिए बेचे क्योंकि उनकी टीम बैलेंस हो जाएगी। ये क्या लॉजिक है? चलो अद्वैत भाई भी जा रहे बारसा, ऑल द बेस्ट कांग्रेचुलेशन। भाई। पैसे प्रॉपर मांगियो, एचआर से बात कर लियो। हाँ कल आए थे अद्वैत, एक्चुअली कल पहली बार हमने ओपन स्ट्रीम किया था, दैट वी आर प्लानिंग, वी आर डूइंग अ वीकली ओपन स्ट्रीम। तो कल वी हैड अद्वैत इन द हाउस, बिग अप टू अद्वैत एज वेल। हाफ टाइम बॉयज, क्लासिक एटलेटिको मैड्रिड फर्स्ट हाफ। अरे भाई ये क्या हुआ, अनबिलीवेबल सच में। थक गए भाई सिटी के प्लेयर्स। मास्टर्स ऑफ फ्रस्ट्रेशन भाई मैं बता रहा हूँ ये इनको और 45 मिनट करना है एंड दे विल बी वेरी डिफिकल्ट टू मतलब टर्न ओवर इन द सेकंड लेग। आर्सेनल वर्सेस नॉरिच क्यों लगा लिया मैंने? बट आई डोंट नो यार, मतलब चांसेस ऐसे भी नहीं कि चांसेस भी बने, राइट धेनुका, लाइक एनी पर्टिकुलर मोमेंट यू रिमेंबर कि यार सिटी शुड हैव टेकन अ चांस, और मे बी यू नो एटलेटिको डिड एक्सीलेंटली वेल इन डिफेंस टू एक्चुअली। भाई साला ने मिस कर दिया पॉइंट ब्लैंक रेंज से, मुश्किल था बट 3-0 हो जाता अभी। अरे बेनफिका विद द चांस भाई, बेनफिका विद द चांस, बेनफिका थ्रू ऑन गोल, बेनफिका छक्का मार दिया 6 रन के लिए सीधा। स्कोर नहीं छक्का मार दिया। अच्छा ऊपर छक्का मार दिया। मेरा यहाँ पे भी स्ट्रीम इज लैगिंग। ये क्या है भाई अद्वैत, वो इतना भी बुरा मैच नहीं है, एज एन एटलेटिको का टैक्टिकल मास्टर क्लास है, मैं तो बोलूंगा उनका एक ही टैक्टिक है, बट आई डोंट नो लाइक ऑल दे कैन डू। वो लोग और कुछ नहीं कर सकते हैं, उनके पास और कुछ करने का स्कोप ही नहीं है। सो दे विल बी वेरी हैप्पी इफ इट्स अ ड्रॉ। हाँ मतलब आई एम एक्चुअली सीइंग अभी वो लाएंगे रोड्रिगो डी पॉल को टुवर्ड्स एंड ऑफ द सेकंड हाफ में भी, तो दे विल सर्टेनली स्टार्ट क्रिएटिंग एज वेल। तो हु नोस, मतलब वो काउंटर पे देयर इज अ पैनिक है ना बाबा, देयर इज अ मोमेंट ऑफ पैनिक कमिंग। आई नो फर्स्ट लेग ही है, बट फॉर श्योर एटलेटिको प्लेइंग लाइक हाउ एटलेटिको डज, धेनुका का व्हाट डज इट मीन? कम ऑन, नो कोड लैंग्वेज, no code language. No, he's saying Dhenuka didi ka kapda is nice. Okay. Nice. Okay, good. What language is this? This is Tamil. Malayalam or Tamil. So sorry about that. Okay. No, Yeah, Prasanna speaks Tamil. Prasanna was in the house. Our cricket guru, definitely we discussed. Prasanna, see, I told you. आपको आती है धेनुका तमिल, मतलब आप बोलते हो फ्लुएंटली? हाँ मतलब हाँ फ्लुएंटली बोलती हूँ, बट वो बम्बईया तमिल है, सो आई कैन स्पीक तमिल मलयालम, बट बोथ ऑफ देम आर बम्बईया तमिल मलयालम। अच्छा बम्बईया तमिल भी है क्या कुछ? चलो सही है। बम्बईया तमिल मतलब बम्बईया का एक ये है कि कोई भी लैंग्वेज ना, मतलब एक 3 सेंटेंस अगर बोलने हो ना, उसमें बीच में हिंदी, एवरीथिंग विल बी मिक्स्ड। ऐसे कोई एक लैंग्वेज में नहीं आती नहीं है कोई तीसरी लैंग्वेज यार। मुझे बड़ा मतलब ऐसा सा लगता है कि यार लोग 5-5 लैंग्वेज बोल लेते हैं यार। I can speak Bengali, this thing, Tamil, Malayalam, Hindi and Kannada. Tamil.
You can speak Kannada. Arey, I really wanted to learn Kannada. Kannada and Telugu I wanted to do so that at least 4 languages South के हो जाए. Yeah. गुड वन चलेंगे करेंगे कभी मल्टी लैंग्वेज स्ट्रीम करेंगे. वील कॉल एवरीवन डिफरेंट लैंग्वेज का मजा आएगा. कोई किसी का समझ में नहीं आएगा. बट एब्सोल्युटली ब्रिलियंट. या एटलेटिको मैड्रिड वो टैक्टिक है. लाइक आई डोंट नो. अगेन कमिंग टू द गेम, देनुका, व्हाट डू यू थिंक? वेयर इज द गेम हेडिंग टुवर्ड्स? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मतलब I think they will go for a draw only. I think करना try चाहिए to score on the नहीं? counter. बस same वही करेंगे वो लोग. They'll continue with this tactic only. They'll try to because City will try to attack, right? City has to, and clearly they looked like the team who had थोड़े बहुत chances at least trying something like going and attacking. So Atletico will just do that only. They will continue to do that, frustrate them, not give them the chance to score and try to hit on the counter, which is pretty much what they do all the time. And they'll stick with that and they'll try to look for a draw, is what I'm guessing. Yeah. By the way, यार people बहुत लोग join कर लिए. Please like the stream. Like I say, it's a normal drill by now. I hope you know it. You need to like the stream. एक like कर दो. And अगर आपने नहीं subscribe किया करें, please let's subscribe not just to us but to Dog Baba if by chance आपने नहीं किया. Any watchers newly who are coming in, and give a follow to Bombaypenia. Bombaypenia, their Insta ID, the handle is there in the description below. So काफी अच्छा पेज है. They do a lot of activity, so do check them out for sure. अगर especially आप बॉम्बे में तो और भी that's something that you can join them. Who knows, and we might get a player out there in the future, right? चलो अंकित भैया, मैं निकलता हूँ. थोड़ा मेरे को स्ट्रीम हॉपिंग करनी है. मार्क करोनी और संडे लीग पंडित्स पे जाना है मुझे. अब सेकंड हाफ थोड़ा वहां पे करते हैं. चलो ठीक है. थैंक यू सो मच अंकित भैया. थैंक यू धेनुका. बाय बाय. मिलते हैं. चलो बाय. चलो एवरीवन, बाबा ओपी बाय. ओके धेनुका, यू आर हियर. तो अश्नीर रोल स्टाइल मगवायर से वेयर प्रोडक्ट मैंने आज तक नहीं देखा यार. कम ऑन, नॉट सो बैड. आई नो ही इज बैड बट poor guy, man. I don't know what he must be going through. Like really, इतना ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए. Just brilliant defending from 10 of them. For me, मतलब मुझे लगता है धेनुका, like again, correct me if I'm wrong, but if City kind of takes off a midfielder and gets Foden on, that I know आप open कर दोगे Atletico के लिए, especially the midfield एक ping करेगी ball to Phoenix and they are done. लेकिन I think probably वो risk लेना चाहिए. Don't you think so? Because it's first leg they're playing at home. I think so. I think it's warranted because वरना यही होगा. This stalemate will continue because it's not working for City. They have tried it. नहीं हो रहा है. They are not breaking through. I think they're probably going to get a penalty at best. This tactic से. And गलती से if like Atletico manages to shithouse a win because of this, I think that will be. I mean, City will be kicking themselves. So it's worth that. Definitely worth that. Yeah, well, obviously, I'm assuming you as well as Chelsea would want Atletico Madrid, right, to play in the semis. No secrets there. Yeah. So, okay, if Atletico survives today, then they have a chance of winning the next leg because, exactly. That's one point. Absolutely, and that's something you cannot underestimate at all. Which player currently has the ability to break the Neymar record of highest transfer money? Lukaku overall तो कर दिया है, if I'm not wrong. Correct me if I'm wrong, people chat. लेकिन I don't know, यार. I think Barca players are probably not going to be sold. I have a feeling Pedri is really generational. I know we use this term very easily. मुझे लगता है Pedri is, but again, I don't think he'll ever going to be moving. He's what? No, I don't think so. Xavi was to Barca. So, but कोई है मतलब ऐसे player जो he'll probably command. I know inflation will come into picture anyway, and there will be people. लेकिन any superstar that you're seeing in the making for the future, जो will be in that league. Mbappe is the only one which comes to mind, right? Yeah, Mbappe is the only one that comes to mind. लेकिन वो तो free transfer है. तो अभी तो है मतलब like in the future, like maybe couple of years down the line. Okay, why is everyone talking the Liverpool game is title decider for City? Liverpool has tough matches after, and as per laws of average, Liverpool will have one off game in the near future for sure. Well, see, come on, that's a rule of football, absolutely right. But this is the toughest game that they have. Let's put it that way, I guess. Yeah. In the remaining, and it's a 6-pointer. Agar if they beat City, I think if I'm not wrong, Abhi City is 1 point ahead of Liverpool. Yes. So yeah, if they beat City, then it'll be like a case where Liverpool can just kind of go for the 1-0 win. And इसके बाद बचे कितने हैं? There'll be 7 games.
Yeah, 8 games after this, if I'm not wrong, right? 8 So yeah. नहीं So I मतलब think ये तो हो जाएगा ना, सिटी लिवरपूल के बाद there are 8 games क्या? Oh अच्छा, let us actually check the table itself quickly. Yeah, I'll just share the table यहाँ पर. Yeah, so I think probably 30. because Yeah, of both teams have 9 played 30. games. So Correct. they have 8 games left, including this. हाँ वही. So after this it will be 7 games. If assuming Liverpool win, so then they'll have 7 more games to manage. Yeah, so check this out, and this is what we are seeing here. And fixtures में देखा जाए तो, okay, by the way, they're just showing Benfica Liverpool के highlights now. Oh Yeah. man, such an easy goal Konate scored. Come on, Benfica could have defended that, right? As in, they gave an easy header to Konate, and what a Yeah. ball from Trent. Oh, that's again just what, 2 passes, Luis Diaz to Mane. Anyway, I Yep. think Liverpool have that in the pocket. There's absolutely no doubt about it. This was As for- Konate's first goal, right, for Liverpool. Was it? Okay, I interesting. think so. I think Yeah, so. Konate. Check. Yeah, again, like आज Liverpool fans आए नहीं लगता है chat में, like देखते. I think probably नितिका भी कर रही है ना शायद stream. हाँ, Nitika is also streaming. Correct. हाँ, इसलिए वहाँ चल गए Right. Liverpool fans. IndyCop है, हाँ. उसका Because they kind of help me in the chat because I don't follow Liverpool as much, obviously. Haryanvi सिखा दो बाबा आपको. Well, Haryanvi is something that I love just to hear. Stop spamming. Okay, yes, absolutely, just it helps because so many comments. That's why maybe I'm slow. City haven't even tested Oblak yet. Perfect game from their standpoint. Yes, true that for sure. No one can handle. Okay, again, passing, pressing, and hence winning over City is a testament to their title-winning chances. I don't know, yeah. This pressing thing is something which has been hyped, in my opinion. It has been forever. Abhi pata nahi, recent years mein it has been, spoken about it so much, and that is what modern football is. Every team is going for that, right? Yeah. So there's no. I think that probably even Real Madrid, Chelsea ka le lo. Last season, we remember, right, the game. I think probably we were there. We were pressing right from the front. So that was maybe the difference, that maybe you will see the other team doing this time around. So because they are more ready, and that's what. As in, you can do that once, but it's no longer a secret. जो होता था ना पहले, like it's a different tactic नहीं. I think more or less every team kind of has that in their locker. Telugu half, okay. Nenu chala enjoy chesanu. Okay, I have to Google that. I don't know Telugu. Kannada to I would have known, but I'm guessing probably enjoyed is what he's saying, Amar. Okay, यहाँ पर 2 goals coming. Let's see. Guys, what about Werner as false 9 as he's not true to his art? I'll put that as Dhenuka. Dhenuka, like you saw last season, I think in Madrid he played as a false 9, if I remember right. That second leg. Yep, he did. So jab he scored that header, he When was he the scored person the there. Yeah. Exactly. But again, I don't know. But यार, that's this what I season- was asking पहले भी, मतलब on that other that when like people were talking about Werner, so the general consensus I got was that at least last season mein Werner was contributing a lot more. He was like defensively and all also, which he has not been doing of late at all, and his form is nowhere close to what it was last season. So I don't know. I don't know whether he'll work as a false 9. If it's like a one-off game again, like last time, that's why I specifically asked. Last season, was it a one-off game when he scored that? Did you? See, it wasn't a one-off game. It wasn't a one-off game. Like he did have some good performances in Correct, Champions but that League. was last season, right? मतलब ऐसा नहीं है कि ये time भी you can draw that analogy and say, see, last time also he didn't have a good run, but he did score. So why not this time? ऐसे नहीं बोल सकते. See, for Vinicius, I can say that. जैसे Liverpool के against, that was a one-off game. Okay, like he literally performed only in that first leg. वो Liverpool के against. After that, he was a no-show in the league everywhere. लेकिन Werner was not like that. So then I don't know if he'll work as a false 9. If it will work the same charm. और है ना तुम्हारे पास यार बाकी के अभी क्यों है, लेकिन वही है ना, मतलब all the eggs are in one basket with Havertz right now. Right now, honestly, that's he the is reality. in form, so I don't know why. Like But he is in form.
I would not put him in the same, nowhere near close to the same bracket as what you guys have, Benzema. You know what I'm saying? Like, that consistency, that experience, it'll take him another year or two. So he can play, every alternate game, आपको मिल जाएगा 9 out of 10 performance, लेकिन बाकी समय he goes even 6 out of 10. That's what I'm saying. So that's his main problem. वो आएगा, the more game, but he cannot play every game, ना. So Darwin Núñez, again, he is a great prospect, लेकिन वही हमने honestly, I'm not going to claim that मैं Benfica का हर मैच देखता हूँ. Nowhere close, exactly. So we have watched Champions League matches for sure. Champions League match में he looked very impressive, especially against Barcelona, वो match में, and of course against Ajax. And today also, I believe, he has a good rating as per Fortmob.com. At least he's their best player. So I buy that, but again, it's too early. For me, if I was a scout, 3 performances is not enough for me. I would probably look at probably a couple of months and then probably decide. Foden and Grealish coming. Okay, interesting. Grealish, I don't know, yeah. He's just got a new, I think, deal with Gucci. So he must be excited getting that Gucci deal. Abhi, so as in probably that is the thing that he wanted. But exactly, like he'll come good. What do you think about wing attacks in front of Atletico? Well, Atletico, I don't know, Llorente, how do you rate Llorente actually? He's what, a winger for you? He's a proper midfielder? What is his best position? Llorente, I like Llorente, okay, and he has been working for Atletico Madrid, especially first half of the season when they were like short on, when they had injuries and everything. I thought he did pretty well, and he was a good player for Atletico. But uska bhi wohi hai, consistency is an issue, and so you were asking if to me he's a winger, right? So I would say yes. I think I'd like to see him as a winger because with Morata and all when he used to play. Konate scored what? PL. Yeah. By the way, shout out to Loudmouth Show. Sorry, brother, I forgot. You're a Liverpool fan for sure. So he's a Liverpool fan, and of course, good content on Insta as well. Do check out the Loudmouth Show. Very good page as well. Okay, I'm LOLing at Ankit's Telugu. First of all, just while I did not, again, no disrespect, I did not even know if it's Telugu. जो भी आ रहा स्क्रीन पे मैं तो रीड कर रहा था. Then finally I got to know it's Telugu. Well, Himshikar, hello. By the way, match has started. Second half. Liverpool के कुछ चेंजेस है क्या? I doubt. मतलब they can rest players. ओ भाई, almost. ये क्या था? अच्छा, offside. Llorente का नाम लिया. Llorente almost score कर दिया थी. Yes, so classic Atletico game, absolutely. Llorente wing back for me. He's a well-rounded player with an attacking impetus. 7.5 out of 10. Yeah. I used to really like Llorente. Even Madrid में से when he went, right, I was not at all happy with that transfer. Like there are few players you don't want to see leave, and Llorente was, I think we let him go too easily for no reason. Madrid is like a Swiss bank, na? Matlab, you just kind of it's like the major bank of talent, and then you just kind of take and distribute. But anyway, because Llorente was good for us. I don't even know what the thinking is. Predictions now. Okay, interesting. मैं तो फिर भी बोलूँगा City जीतेगी. I don't know what you think, Dhenuka. What do you think? I think so too. I think City will win. Yeah, it'll be close though. Not as easy as what I thought. Oh, यहाँ पर हो गया almost. Oh, offside होता शायद ना Sterling. Are you watching the other game? मेरा lag है. Which one? Sterling. हाँ यही ना मतलब. मेरा lag. You must be around 43, I'm guessing. No. I'm on 46:30. 46:30. Yeah. So good. Yeah. Okay. I just saw the missed chance. Oh, bhai, what a counter! Okay, sorry, I'm giving spoilers to Dhenuka. That's fine. That's totally fine. ये ऐसा same हुआ था मेरा स्पेन के WatchAlong के टाइम पे स्पेन. अरे मेरा हर WatchAlong में ऐसी होता है. मैं क्या करता हूँ, गाली देती मुझे चैट वो क्या यार. मेरे लिए ये वाले मैच में फर्क नहीं पड़ता है. So I'm literally, yeah, but what I have to do is in slow motion I have to react. That's like kind of funny. Yeah, by the way, यार काफी लोग अभी fluff that up. Totally fluff that up. That would have been a really good. था कौन ये? What a beautiful run that was.
Yeah, Griezmann, pata nahi yaar, he's not got that with Atletico again. Somehow it's not kind of working for him. Pata nahi. As in, I think what is your Griezmann ka prediction? thing was one of those things, right? Like Barca didn't need him. They just made like a superstar signing when they really didn't need him, and it didn't work out. That didn't work out, and then he was working so well for working out so well for Atletico, and then he comes back, and it's just sad because he was a different beast altogether when pre-Barca folded. Yep. Again, people 2018. do like the stream. Do check out basically the links that are in the description. Will you do Simeone celebration if they win? Well, अगर Chelsea जीते तो करेंगे. चलो, वो promise कर देते. Okay, I'm giving a but again यार big deal. वो तो मैं ऐसे भी करता हूँ normally. लेकिन Simeone is like man as in character है. But seriously. अलग लेवल पे है वो. Yeah. Well, again, I tell a lot about celebrating and all that, but I don't know about Dhenuka. Like for me, I remember last season of Chelsea जीती थी Champions League. It was totally unexpected, right? As in the way we won the Champions League. So I was like, I think I was discussing Baba and Guruji and everyone, right? So we were on stream, or literally none of us kind of slept entire night. I was like, I can imagine. probably उस दिन मैं first live stream किया था actually. I did my first live stream on that night, and I was like night 9 next morning 6 o'clock. I'm like okay. Just kind of raw emotion. That is what kind of Champions League brings you. But again, as a Real Madrid fan, so you're pretty spoiled on that. So, but it's been a while, so I'm sure it's never enough. Yep. So Kevin De Bruyne with a nice attempt at pass, but chalo corner. I think Kevin De Bruyne will raise his game. I think so too. I hope so. Yeah. They are just वही बोल रही ना अब तक तो बस फ्रस्ट्रेशन पे ही आ रहे. If they keep their cool and go about like attacking relentlessly, or yeah. So someone asked like did either of the teams like Atletico didn't have any shots on target, but did City have any shots on target in the first half? Let me just check the stats. नहीं actually No, both of them didn't big have chances any. 0 है. Expected goals 0.25 City के. चलो this was a shot on target technically. No. Again spoiler for Dhenuka like That's okay. That's okay. Lorente gets a shot on target people. जैसे I don't know यार और बोलो Dhenuka come on let's actually jinx for City. I know City fans will come and kill me now. अरे मैंने ऐसे ही बोल दिया. I honestly thought that they were... Ankit don't get bottles thrown at you. Oh, Simeone वाला था ना he got anyway. Yeah. Atletico looks threatening. हाँ counter पे लग they रहा are है always threatening on the counter. That's how they operate. उनका वही है. But the thing is, City is not looking like पता नहीं. They don't have that teeth. Benfica Somehow they're letting. What? अच्छा वो तो मैंने बंद ही कर दिया था शायद. यार मैं ना वहाँ पे बंद हो गया मेरा. वो अब लग रहा है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मैच हो रहा है नहीं? Oh man, interesting for sure. Enjoy that assist. क्या हो गया? Oh. Okay. क्या हुआ? Not disallow है. Nunes ही है. Darwin Nunes. Oh, the guy is actually for real. He's here to stay, huh? Big league में. Hype is not just hype. Yeah. Yeah, anime, I don't personally, but I won't mind. It's just that time नहीं मिलता, I would say. But yes, probably there was a time. What do you think, Dhenuka? Are you into animes and all that? No, I'm not. Like I know, said, no. Anything Bharat addictive, I try to stay out now Mhm. because I don't have that. I seriously don't have the time or कुछ नहीं between. But yeah, I know I'll get addicted big time to anime if I watch. Okay, so otherwise the go on interesting. One more, please, Benfica. Well, why not? Let's make it interesting. It should be fair for City also. Come on, दोनों ही the weekend में भिड़ रहे हैं. What else? I was expecting more from City. I'll be very honest about it.
much more in fact. It has been kind of disappointing for me. City का kind of वो threaten ही नहीं किए ना, मतलब at least they should have been a threat They are not to looking some threatening extent. at all. मतलब Or Atleti changes we are is not seeing, so I'm like surprised, it's like almost चलो ठीक है देखते हैं, maybe at the 55-minute mark. Pep is pulling a Carlo. अभी वही है ना, इतने लोग बोल रहे हैं you're overthinking now. He's gone too Thinking expected. You expect typical वाला performance हो रहा है now, and what to expect of वही की है Atletico Madrid on the other hand. ये इनके सेट पीस से कुछ हुआ नहीं, I'm guessing. अभी हो रहा है, they took about 10-15 minutes to actually set it up. अच्छा तो मैं I caught up क्या, मतलब नहीं होगा ना? नहीं वो अच्छा, actually what इतना time? time ले रहे हैं ना ये लोग. De Bruyne और Mahrez couldn't decide, I guess, who's gonna take it. Okay, finally they did. और यार भाई इतना टाइम लेकर भी क्या तो लिए सेट पीस. You should really check it out. Funny man. I thought with the tackle itself, I thought it was clean. Like jinx. I wish I had that power just well. Come on, I just wish. I wish I could have jinxed as much as I can. Yeah, but absolutely, I get what you're meaning. Okay. अभी एक और फ्री किक है ना? I think Dhenuka is getting. Okay, we're back. Dhenuka is back, right? Hey, I can see you. Can you guys? हाँ, then fine. थोड़ा इंटरनेट का था 1 सेकंड के लिए. हाँ, मुझे वो pixelated वो कुछ दिखा. Is Atletico playing in Leon jersey? क्यों? नहीं. ये तो Oh, almost. Jan Oblak gets his first save proper. Yeah, Pratik, hate is a very strong word. Just a suggestion. I would just say hate is an extremely strong word. But again, it's up to you, your choice. But I'm just saying, yeah, you might dislike someone, but hate, I don't know. Again, English classes, like I say. But talking about Benfica, Liverpool. Yeah, I quickly lost my stream. There are no changes. चलो वो मैं टीवी में देखता हूँ. एक्चुअली टीवी में बेटर होता है. यहाँ पर ना वॉल्यूम कम होना. टीवी पे एटलीस्ट इट्स इन फ्रंट ऑफ माय आईज, राइट? आई एम एबल टू फिगर आउट व्हाट्स हैपनिंग. Pep is beginning to get nervous. You can just sense the body language. Yep. Okay. Okay, I get it now. Did you get it, Dhenuka? Thank you, Adre, बोलने के लिए. So what happened is like what Leon did to City, right? Oh, I don't know why I was focusing on their kit. Sorry. मैं literally यार एक तो यार to be very honest about it, it's 1:45 in the morning. That is the main reason, or it's been a long day for both of us. I'm pretty sure that's the only reason. But match तो देखना ही था. So yeah. Oh, Sterling. Where do you rate Sterling? Like just as a La Liga fan, Sterling, I don't know. Like, would you say that he's one of them who kind of does get the bad side of the English media more, or you think? I think so. I think because I don't know the news itna to I don't follow itna. Yeah, like I'll give you an example. The reason I'm asking that is because like Rashford ले लो. Rashford I know has not been in form at all for United. But the fact that वो इतना करता है for the society and all that, right? And then that kind of subconsciously in the English media comes as like they have a soft corner. The good boy, bad boy image. Yeah. Exactly. Well, yeah, like in cricket, which right was Rahul Dravid versus Ganguly. I know that a lot of my friends, especially Bangaloreans, they had a very strong inkling towards Rahul Dravid. Another way, for the other side of India. But that's what happens. आप अगर certain
place से हो, you kind of know. I'm a die-hard Rahul Dravid fan. Oh, okay. Chalo, good. Yeah. But In no, fact, I know what he you was in mean. my academy. He was actually part of the academy. I was part of it. So Really? great person, man. Very down to earth. Yeah. So my brother sent me a pic with Dravid once at one of the press meets or whatever. And I just told him, "Did you tell him I love him?" And he said no. And then that was the end of the conversation. Yeah, I had a lot of friends. Kind of, tried on Dravid, put it that way. But anyway, diverges the proper profile for Sterling. I think that's what I think maybe the fact that वो dive करता है, that's a fact. He does dive a lot. That goes against him. I know he was pocketed by Reece James, just a reminder, but he's done well. To be very honest, he doesn't get the accolade what he deserves, I personally feel. Oh wow, Felix, man. What a baller. Man, he just did a Kaka. Okay. You have to watch that, what Felix just did now. He almost did a Kaka, what Kaka had done to Manchester United, almost. Wow. Okay. Oh भाई, Griezmann को बुरी लगी लेकिन I think it was follow through of Bernardo Silva. Oh. Okay, so usually हम क्या करते हैं ना वॉच अलॉन्ग में, आज तो खैर बाबा थे for half time, so I kind of didn't do it. Plus it's a Champions League night. We do a quiz as well साथ में, and that's a surprise for Dhenuka. I was like यार साला सच में 2 बजे रात को मुझे क्विज करने के लिए बैठा रहा है क्या? I'm just saying. आज हाँ. Next time I'll be prepared and. अरे it's a fun thing. And ऐसा कुछ contest नहीं है. It's just a fun thing, तो हम ऐसी टाइम पास करें क्योंकि वॉच अलॉन्ग में कभी-कभी क्या होता है ना, it's kind of Griezmann, okay. Llorente is off. Okay. Matheus Griezmann Cunha is off and and Llorente is also off, no? Correa is in. yep. So क्या बात है. in fact I saw 3 people. Let me check again. Oh no, 2 people. You're right. No, दो. Koke is off. Griezmann is off. Llorente and this one. अरे ये कोके को दिखा रहा है, वेबसाइट दिखा रहा है कोके for some strange reason. Llorente गया and Griezmann. पता नहीं आगे जाके. Big up yaar to Van Gaal, man. Louis Van Gaal, I don't know, different element, man. I mean, What a man. Amazing. Yeah, but Koeman is the new set to be the new coach, right? हुआ नहीं ना, अभी तक हुआ नहीं है. कल बात ही चल रहा था. All set बोल रहे हैं ना, पता नहीं I don't know. Yeah, I'm not so excited with that news, but I can imagine. मतलब in fact दोनों ही ऐसे थे यार. मतलब I know it's about the Dutch thing. Most of their good players, haven't really proved that they'll be so good for the national team. You're a Dutch fan, no? Yeah, I'm a major Dutch fan. So I'm like, I was like pinning my hopes with Louis Van Gaal कि यार उसके tactics are like next level. वो tournament football के लिए ideal tactics है, he knows how to win cup tournaments. He's good for that. Some managers are like Jose Mourinho. आप कोई भी tournament में डालो, he knows, he just goes that way. So that's something that you cannot take it away from him. But again, Fernandinho is also warming up. Don't tell me यार. He's like last season के Champions League final में we didn't have a defensive midfielder. Let's put extra defensive midfielder अभी. यार अभी तो लग रहा है City have not done any substitution ना, अभी तक सिटी का कोई भी substitution नहीं हुआ. Exactly. अभी करेंगे, अभी वार्म अप कर रहे हैं तो लग रहा है करेंगे. लेकिन Atletico, would you argue second half Atletico is done better than City? Yeah, I think so. They are clearly okay. Yeah. They have not looked rattled at all, and actually possession अभी देखा जाएगा तो these people have had quite a few chances. Atletico, which I honestly didn't expect. वही है ना वो सिटी का, it doesn't look like they have teeth. Attack उनका ठंडे पड़ गया एकदम. अभी नहीं करते. They're trying to do that whole beautiful football thing and try like the passing and everything is happening, but no teeth in the attack. वहाँ पे these people are easily overcome. Oh, don't tell me penalty क्या? नहीं
I don't think so. नहीं अरे it's okay even if you spoil and all कुछ फर्क नहीं पड़ता. This is नहीं, basically spoil I'm नहीं here मतलब along for the ride. if we kind of react together, it's even kind of natural, right? So let me see. नहीं, I'm just checking out Benfica Liverpool बीच में. नहीं, वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा. वहाँ पर stats देखो तो it's like oh man. So Benfica just snuck in a goal क्या? Yeah. Oh, City should have scored. City missed a glorious opportunity here. It was a set piece. Laporte, free header था भाई. Oh man, I can't believe. As in good for me. As in I don't want City to win. Just saying it out there. But I'm sure City fans will be like, come okay, on, that's going to haunt. at least he should have hit the target as another minimum. So 6 big chances Was he created by marked? Liverpool. He wasn't even. Yeah, he has been bad defending for once, but yeah, I don't know. Yeah, people in the chat, you tell me as in what's your prediction now? For me, it's kind of changing. It's slowly changing, and the predictions shouldn't change. But मुझे तो लग रहा है अभी I have a bad feeling about City kind of giving it away, and all the antics have started. जबरदस्ती गिर रहे एथलेटिको के players. Closing in on 70 minutes, no? होगा. Nathan Aki, headed the ball to himself. Okay, otherwise saying, guys, to be honest, I expected Atletico to do well. El Simeone would send South American vandals to their houses. Views on players' house robbed when they are playing good in this plan. Well, as in, I don't know, South American thing is a different thing. There's asleep morphine keeps going. Okay, I got to know, Adwe, what's the secret of your energy? It's morphine, but let's see. As in, will Pep dance on levitating today? Well, I think that's a pun. Come on, let's be honest. It's a game of football. होगा अभी changes कर रहे हैं. The Pep is talking. 10 मिनट से बात कर रहा है फोर्डन के साथ. पता नहीं क्या तो tactics बोल रहा है. Literally 10 मिनट से कान में पता नहीं 10 minutes से is going on talking. Okay, after that royal controversy, I want Benfica to do some upset. Sorry, but it is what it is. Viscle Barca. By the way, you're a huge fan rooting for Chelsea in UCL. Shubham, thank you, bye, absolutely. And yes, again, Shubham and everyone in chat, do kind of like the stream. Share it on social media. It always helps. And अगर आपने नहीं follow किया Bombay Penia को, I would highly recommend it. मैं Chelsea fan हूँ, I follow it. And trust me, there's a lot of activity on that account. I follow that. They have, I think, they've conducted matches almost every week, if I'm not wrong, right? Dhenuka? So you see a lot of content there, and you can be possibly part of that in the future. Who knows, right? So give it a shot for sure. Okay. यार वापस वही Atletico back to defending. You know what? Honestly, that's why. Again, I'm putting out the sorry City fans. मैं almost हर तीसरे स्ट्रीम में बोलो City fans यार मारेंगे पकड़ के मुझे. City के games मुझे personally I don't like watching. अरे penalty नहीं, बच गए. Dive. Because it's like they are beaten by dark arts proper. So it's like stop and start games, or it's like they're dominating, the entire world. Each का नहीं होता है उनके मैचेस में. Whereas you see Liverpool and Tottenham, they kind of are having some unexpected. Even Arsenal for that matter, आपको कुछ unpredictability मिलेगी, just as a neutral. But really, Atletico has defended well. See, not to take credit away from them. That header was like it was a free header, of course, to set piece. Yeah. But other than that, if you see, they're keeping it so tight. That is. See, City look very fluid in their passing and everything, but final third में जाके वो लोग अटक ही रहे हैं. अच्छा एक सेकंड. There's a mosquito next to my camera. I'm trying to shove it away. It's kind of gone. आपको वही दिखता अभी नहीं तो. Okay, City don't need number 9 who can start day in and day out, but for these situations on the bench, yes, I think that is what एक अलग brand of football is something that they need at times. That
Plan B. Sterling is off. Okay. So Sterling is off. Foden is on, I think. Grealish is on as well. And Gabriel Jesus is also on. Interesting. So he's going for the kill, Pep. Mahrez is off. यार like for like किया है. Come on, I expected him to take off a proper midfielder, नहीं? हाँ, मेरे यहाँ पे अभी हो रहे हैं substitutions. हाँ, Grealish. In the other game, surprising. Okay. Is Salah off? अच्छा. अरे भाई ये क्या हुआ? साला माने दोनों ही ऑफ. Okay, but Firmino तो Jota. हाँ. अरे he's getting ready for the weekend, ना? He's rotating everyone. I think it's risky though. It's 2-1, man. I mean, how can he? But Jota is in good form, and Firmino also decent form. यार आते ही येलो कार्ड ले लिया रोड्रिगो दी पॉल. Okay, Rudiger, any Chelsea defender except Christensen to Barca, is it possible? यार कितने लोग लोगे? शुभम, come on. There is a cap. Overflow हो जाएगा. It will be difficult for Javi to manage. अभी भी in fact, if I actually see Barca squad is one of the biggest squads. इतने सारे injured players हैं. They have a lot of players. Options काफी है. यार इसका क्या एरिक गार्सिया का क्या करोगे आप? वो सिटी छोड़कर गया था, याद है तो आपको? ओ बाय द वे गोल हो गया. चलो, we have to clap for the patience that we have kept more than City. I'm like, चलो एक goal तो हुआ भाई. I'm like, oh my god, some action. We just needed some action, man. As much as I'm not really, really very happy, but it had to be Kevin De Bruyne. Oh, that was a good finish. Of course. Yeah. For once, I think their left back, was it? The left back slept. Kind of was beaten on the right hand side of City. Right? But anyway, people, again, like City fans in the house, how are you feeling? I'm pretty sure you were nervous by till now, but City fans, I know as a matter of fact, there are a few City fans in the house. Do comment. Kevin De Bruyne, I think, where do you rate him? It's probably, I think he'll go on to become the greatest ever City player for me. I'm pretty sure, and so consistent over so many years. Yep. Ankit, do you think that Johnson David got underrated for Mbappe and Haaland? Yeah, I don't think you can really compare. Like, again, he has to play at the elite level. When I say elite level, it was top club. If he performs in the top club, maybe. And you can argue that abhi Mbappe and Haaland nahi kiye kyunki PSG, as much as we say it's a top club, they've not done something in Europe League. We know that, they are that team in terms of quality. Haaland, I think Dortmund have that on the day over the seasons. I remember the lockdown season, right? They were very close. They were very close to fight. So I would actually give it, I don't think we can compare. Jonathan David has it in him, but abhi it's too early. Shubham, मैं आ रहा हूँ contract लेकर. Okay, fine. So I think Shubham, you have a new person in Barca. That is Adwait, who's coming in. City. KDB, yes, come on City. Okay, Kumar Yashasvi, I'm assuming you are City fan हो. Yes. अंकित, कल के लिए डर तो नहीं लग रहा मैड्रिड अल्ट्रा. यार डर लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा? डर नहीं लग रहा यार, तब तो मैं फैन ही नहीं हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब वी हैव टू बी रियल. इट इज रियल मैड्रिड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट? टॉकिंग अबाउट रियल. बट या एनी चैंपियंस लीग नाइट, मैं तो यार लिल के साथ भी काफी नर्वस था. That's how the fan I am, like not just me. I know Dhenuka, how are you feeling? Butterflies yet? Not yet? No, absolutely. I like you said, no, it's UCL nights. हमेशा वो तो रहेगा ही, and yeah, it's this team is also this formation, this coach, everything is very worrying. So I'm excited and nervous. So. Being a Madridista, it feels so awkward to support Atletico, but we do not want to face City in semis. हाँ, मतलब वही है कि यार, I think recent में हुआ था ना, when I think Liverpool and Manchester City were playing, or the other way around. Sorry, Manchester United were playing, and Liverpool was supporting them, fans, right? So it was like one of those things. That is football for you. I think, believe it or not, Spurs actually saved us. If we had not won the Champions League, if in case, we wouldn't have been in the Champions League this season if not for Spurs. Gareth Bale.
a Madrid player and a Spurs player. He saved us. If not for him on the last day of last season, so that is football for you. That's why Kevin De Bruyne. अच्छा, मैं सोचा जा रहा है, अभी कहाँ जा रहा है? नहीं, he's going to take a corner. Okay, I hope both teams lose. Come on. That's like बहुत ज़्यादा expectation ही हो गया. नहीं, वो there's that meme kind of thing also, na? Yes, yes. Always Ala Madrid in other ones. Link to Barca, I think my transfer is on. हाँ, अद्वैत, तो आपका तो confirm हो गया from what I know. It's definitely on. But वापस बेंफिका लिवरपूल का देख रहा हूँ मैं. Okay, they have made 3 substitutions ही की ना अभी तक. But again, they have a great bench. Liverpool, man. वही तो, they are another team जिनका bench strength is really good. And all of them are in sort of form. Jota, Firmino, like Firmino last season was not in form. He's found his form. And then Jota, Firmino, then Luis Diaz. क्या signing है? ये पेप डांस क्यों कर रहा है भाई? कोई बोलो मुझे. I don't know. I think, come on. It's not a sue. No, it's basically Pep is doing something and he's trying to say something to his backroom staff. बहुत ही funny था वो. Achha, what is this? Oh, acha. He's just communicating very aggressively with his own people. Yeah. I'm surprised for Benfica. They haven't got Seferovic on, man. I mean, Haris Seferovic, I thought would be playing in this game. He's back from injury, I know, but it's like almost 70 minutes. He's not got Seferovic on. Very, very surprising. I'm guessing वो नाम के लिए bench पे रख दिया. He was not maybe fit. Who knows? Probably. That's what I also think. I don't think. And of course, he doesn't have the pace much, but still, it was a gamble. What can they lose? Yeah, matlab, at this point, they don't have to lose. I think you were breaking. Bench you might want to come again. Oh, okay. Yeah, now it's fine. Bolo. Sorry, you might want to repeat. No. I was just saying that if he's fit, then get him. No, what are they waiting for? They have nothing to lose. Exactly. I mean, I'm kind of surprised. Or they वो shape रखना चाह रहे हैं just to kind of play in the same shape and hit on the counter. I'm guessing, and that's why they made only that one substitution as of now. Despite 74 minutes हो रहे. Strange. 5 substitutions होते हैं Champions League में तो I think most of the other leagues have 5 substitutions, right? If I'm not wrong. Yeah. Okay, go to football. हमारा coach believe नहीं करता है उसमें, वो अलग बात है. नाटक शुरू. यार अभी तो नाटक कर रहा है, एक गोल पीछे है. It is for some penalty क्या? नहीं ऐसी कोई कॉन्डोक भी है क्या? Rodri tackled him apparently. Rodri का जो सीजन है इसके बाद में it doesn't start for Spain. It'll be robbery. Who? Rodri, after the season that he's having in Man City, probably he's not going to start for Spain. He'll be on the squad for sure. They'll probably start Busquets, right, because of his experience, and of course he's also. And because he's captain, probably. Yeah. Captain, I think even Jordi Alba can wear the armband or Aspi can, but I think probably he's the most experienced in the team. We've got a partner. You remember that 2 long shots of Son against City in Champions League semi-final? Yep, absolutely. Again, things can change in a minute. That's Champions League for you. लेकिन मुझे लग नहीं रहा है अभी कुछ होगा ऐसे. Korea is one person, right? Korea has a knack in scoring those kind of goals. Yeah. So it's a shame KDB got in his prime a little later in his career. Man, he would have been on Iniesta's level. I think abhi bhi hai. He has next year. He has been damn consistent for so long now. I mean, even before last World Cup. So, itne saalon se to I remember going into the World Cup even last time. Like KDB was one of the when they ran the polls and all of those things. He was one of the players that people were looking forward to watch against Belgium. So, itne saalon ke liye consistently being that good.
Yep. I think पता नहीं यार, मे बी यहाँ पर वो लालिगा वाला इंग्लिश वाला डिबेट हो जाएगा शुरू, आई नो, which we don't want. But वही है, as in it's just the fact that more flair in the La Liga is more visible because of the league, the pace of the league compared to England, and that's why maybe as in that's something that No, people but want to see. I don't know. Is KDB not rated highly enough? No, he is, but I don't think he is spoken of in the in terms of quality, in terms of level, the Iniesta level yet. अच्छा, that way. See, वो तो क्या है ना कि a lot of it also coincides with, see, Xavi, Iniesta and all. It was also because the rise of Spain at that time. So with the national team doing that well and क्या वो वाला कोरिया नहीं यार. अरे आपके जोक्स का है ना, मतलब you are at least keeping us awake. Like I'll give you that. My German gets anyway. Yeah. Is it Neuer for whom Tester didn't get a chance in Germany? I think he wasn't better than Neuer. Period. Would you take that? Yep. Both were very good, but I think Neuer was an institution in his time. Yep. Neuer over Tester. Thank you with KDB. He is new, yeah. That's what I'm continuously saying, right? KDB has been consistent for so many years in the Premier League and with Belgium, and Frankie still has a long way to go. So let's see how consistent he is. He lost his form. He lost his form early on in the season. He is Correct. picking it up now. Now it's really good. Yeah, now it's really good. Yeah. So it's too early to. Wow, compare. Foden is like literally. Oh wow. But Foden thanks for at least not comparing him with Zidane, like I keep saying. No, but even this one, I would kind of. I'm offended as a Dutch fan, but I would actually give it to KDB. KDB has much more. Yeah, Frenkie is more like a central midfielder, a right central attacking midfielder at best. KDB can literally play false nine. He can play anywhere. Yeah. Sony. He's a complete midfielder. It's difficult to find people like him, I think. Oh yes, Adley, we were just kidding, man. I mean, come on. Like I said, those jokes are helping to keep us awake for sure. As in, again, you can probably try your hand at more of those. Let's see, as we'll probably give you feedback based on how they come out. But that's totally up to you. But yeah, as in 10 minutes left, Man City getting a tough 1-0 win, as in that's something that I did not see happening. But Felix is off, Lemar is on. Oh, that's like a disappointing, man, for Atletico Madrid fan. Not that I know many, but no, but I think the Atletico, at least, I mean, I don't know too many of them, but the ones I know, I think they were pretty realistic. No, but why no Suarez abhi tak? That's a good question, actually. He scored in the last game. See, that's what you're getting, Lemar, when you are 1-0 down. Yep. I don't understand that. And that is the problem with Simeone. I see that वो क्या कर रहा है ना, वो 1-0 is okay with him and he's going to go for the second leg is what I think he's doing. That's exactly what he's doing, because I don't get it. Like Suarez scored in your last game and he was, I mean, he's Suarez. 15 minutes, man. He got the brace in 15 minutes. Yes. And why would you not use that? As in, yeah, pace and strength is not everything in football. Like, Simeone, he's kind of limited in that. I support Argentina, but Dhenuka, ma'am, that model strike was sublime. Oh my God, I remember that one. Yep, the one last World Cup. अरे City से Liverpool, चलो देखते हैं. Liverpool इतना strong नहीं लग रही यार. मतलब I don't know. See, yes, I know they have dominated in terms of the gameplay. Like it's 2-1 against Benfica. The game is not over. The tie is not over. It's far from it. I think the classical example would have been Real Madrid, what they did to PSG. I know it happens only once in like maybe 2-3 seasons, such a result. Acha, and Benfica didn't pick up any yellows. Kuch nahi hua na. No one's missing the next game or anything so far. Adel Tarabt has got a yellow, but I'm not sure if Adel Tarabt was one of those 7. I think he was. Was he? But yeah, not that Tarabt is really world class. Okay, then it's अरे यार लड़ाई हो गई. चलो शुरू एक्सपेक्ट कर रहा था रेड कार्ड भाई पोल लिया है आप लोग ने. विलिश लड़ रहा है. ओ क्या हो गया इसको?
मैं yes बोला था रेड कार्ड के लिए, होगा कि नहीं ये गेम में. Pep literally snatched Grealish. शुरू. Wow, that was like. Yikes. चलो और चाहिए थोड़ा ड्रामा दे दो और we can take that for sure as a neutral. Oh my God, like Not really. Pep is pushing everyone away. It was a tackle from behind. Tackle from behind was in the El house. Clasico and UEFA. Argentina, what? I'm confused. El Clasico in नहीं, UEFA El Clasico Super and Cup. UEFA Super Cup. So recent वाला, Real अभी Madrid वाला. versus Barca. नहीं, Super Praveen is Copa. expecting or maybe hoping that Real Madrid wins the Champions League and Barca wins the Europa League. That's Super Cup. I'm thinking about our Super Copa, which happened in that. अच्छा नहीं. Saudi में. मेरा दिमाग कहीं और है. अच्छा, by the way, you know this, Argentina are going to play Italy in June. एक और अभी नया कप निकाले ना FIFA ने. That Venimisi or something. हाँ, क्या था वो? Yeah, I know what you mean. It's the South American thing versus the winners Copa America of the winners versus Euros. Euros. अच्छा हाँ, Euros था, correct. Yes. And it is like kind of so strange because I think it's kind of because Italy नहीं होने वाली थी World Cup में. हाँ, qualify नहीं हुए तो. I sensed it almost that वो होने वाला है. But it was a coincidence आप बोलोगे, but I think it was not a coincidence. It cannot be. That's what more business because Italy gets a lot of crowd. This is more fun than a whole match. Yes, we need some drama. Yellow cards अभी जाते हुए left right center. City क्या पागल हो गई क्या अभी yellow cards क्यों ले रहे हैं ये लोग? What is going on now? Gabriel Jesus misses the next match. How foolish could he be? How foolish, man! You're winning the game. You come as a sub. You are on a yellow and you get a yellow card. Like stupid guy, man. Yeah. As in bad for him. Oh, finalism. Okay, thank you. यार वो word मुझे याद नहीं आता है. Again 2:15 बजे सुबह के, तो थोड़ा सा इफेक्ट होता है. मुझे तो ना वो Carabao Cup, I cannot remember the name of that thing to save my life. Carling Cup ही बोलता हूँ मैं तो. Carling Cup ही वो Carabao आने के अंदर एक बार I just froze one day on that thing saying, what was that cup? That was Carling Cup पहले. League Cup is best, but if you think if Argentina or Portugal win World Cup, the debate would be over. No, yaar. Would you think? Debate will नहीं यार. Debate. There is no debate. Very tough, to be very honest. There is no debate only. Let's be honest. All are goods. दोनों goods है. There is no Messi or Ronaldo. I mean, they've defined like more than a decade. एक decade भी नहीं बोल सकते. More than a decade. Yeah, literally, I think. Era defining. 17 years हो गया ना Messi को, if I'm not wrong. Correct me in the chat if I'm wrong, but I think 17 years. Ronaldo also, to be honest, 2004, 18 years. Ronaldo, I remember 2004 when he moved to Manchester United. Correct. Oh, nice try by De Bruyne. Exciting matches going on, especially Benfica, Liverpool. Vidhi, really? Thank you, bhai. Join करने के लिए. I know guest appearance करते हो कभी-कभी, अच्छा लगता है. Vidip is one of the first kind of followers of the channel, so big up to him. And of course, Vidip, I know he is kind of busy with school and college and stuff. Lekin he has a great channel. I hope Vidip आप वापस आओगे. Football match daily. We are waiting for your content for sure. हमने feature किया वो भी channel को on the channel, so pretty good. Actually, मैं Bombay Penia का forget कर दिया. I'll add that also. Let me add that. Because I'm pretty sure Dhenuka like one fine day like मैं भी करती हूँ YouTube and she'll come. She'll come back. Okay, never say never, but मुझसे नहीं होता. मैं बोलते रही हूँ. What about G2? Like he's not into that? I don't think so. We do have a channel actually that we are looking the Bombay Penia channel which is there. अरे है ना. मैं अच्छा आपने देखा ही नहीं क्या? मैं यार कल की स्ट्रीम में भी पूरा हाईलाइट कर रहा था आज भी कि I hope some people have subscribed at least यार. यार देखो मैंने किया भी. नीचे दिख रहा है एक मैसेज. Penia Madridista Bombay. हाँ, correct. Yeah. I checked it और मैं सर्च कर दिया, रिसर्च करके ढूंढ के finally I found out. Yeah, because it's not. I recently found out that it is not discoverable या ऐसा कुछ है. नहीं अभी maybe वो सर्चिंग चेंज अभी I just gave Bombay Penia it's coming अभी आ रहा है क्या? Okay, so somebody has done something. I think I just told like two three admins. I said कुछ नहीं आ रहा है अपना. Apparently channel is not searchable. Yeah, some people I will spell it as Liverpool fan told us. I just give Bombay space PENA, then it comes. Yeah.
the problem with that is actually वो क्या है ना स्पेन में I'll tell you why our Twitter handle is different क्योंकि Spanish में it is Peña, it is the N with the thing. Yeah, exactly. So like people thought it was a good idea to call it Penia so that it's not people don't call it's it as easier. Pena. Exactly. तो इसलिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है बट आई स्टिल थॉट दैट उसको और ही कुछ ऐसे ही रख देना चाहिए था बिकॉज पीपल आर नॉट गोइंग टू गो बाय द फोनेटिक थिंग व्हाइल सर्चिंग खैर ये तो काफी मतलब ये हमने पहले ही कर दिया था एंड दिस इज ऑल रीसेंट तो अभी हैंडल्स वगैरह तो चेंज नहीं होगा. Where are you on this Ronaldo thing? But anyway, I wanted to ask you, Dhenuka, like, because I know most of the Madrid fans by default Ronaldo stands होते हैं, right? Where are you? Like, again, I know I'm putting you on the spot here. No, I mean, look, I love Ronaldo obviously as a player, as a Madridista. I love him because he is one of the legends at Madrid. Right? He's a Madrid legend, I think. So, yeah, but I'm also not one of those fans who'll be like. So for me right now he's playing for United, so I look at him as that. It's not like I don't cry and go sleep. And this is not just with respect to Ronaldo. Even when Raul moved to a different club. अरे भाई क्या था गिलिश का मस्त. Yeah. No, I think that's fair. That's fair. That is what it is. But that doesn't mean I don't. He is a Real Madrid legend. He will always be. So. I think you know why that question comes. Even like coming from of course you know Udayan was asking about that, but like merely it was like I can have a comparison if I compare in cricket. Like maybe I know it's nowhere close, but in attitude is just the persona, the personality they are. Virat Kohli kind of is very similar. Yeah, it's very similar. Exactly, right? It's that Kohli. Yeah, because there are people who are aggressive. Naturally. Aggressive, not naturally that alpha sort of thing, and you know they are the. And I don't mean a Ranveer Singh here. That's a different level. वो तो पागलपंती है. But yeah, as in it's and I'm an RCB fan, right? I'm a huge RCB fan. So again, Virat Kohli. So लोग क्या है? A lot of people out there. Again, it might be controversial, especially for RCB fans. It's a touchy subject. They are RCB fans because of Virat Kohli. Sorry, I'm not that. I'm nowhere close to that. Same thing with I have observed that with Madrid also. वो लोग Madrid के fans है for Ronaldo. Yeah. Same goes for United. True. Again, it's their choice. Yeah. When Ronaldo left, so many like Madrid fans were. I think we also lost so many fans because they all sort of jumped ship and whatnot. But they are also Madridistas. They still follow Madrid. But ऐसा वो होता है ना कि yeah, they feel sad when United loses, or basically they see it as a loss for Ronaldo. So Zizo, hi. So Zizo is Dhara is one of our OGs. So she is the one I was talking about who lives in Canada, and okay. She is my first female Madridista friend. Oh, interesting. Yeah. So We were I might be back girls. as well. I might be back. I was living there for a good while, so who knows, right? It's a small world, So she's originally she's from there. She's from Canada. She's Canadian, and she. So we were two girls in a group of I think over 10,000 guys. Again, another group. यहाँ पर seriously man, I'm like I'm mute पर रखा हूँ. चलो कोई नहीं. नहीं, Liverpool scored again. किसी ने लिखा ना Liverpool goal. Yeah. It is a goal. 87 minute. Luis Diaz. भाई Luis Diaz, what a player they've got on their hands. Assist by Naby Keita. अच्छा. Liverpool are going through 3-1. I think it's very difficult now. यहाँ पर लड़ाई वापस होते हुए बजे हुए. ये लड़ाई क्यों कर रहे हैं Atletico Madrid? Ederson also yellow carded. I think the point about South American was right. Adway, I think you were making a point. It is about that South American mentality. It is kind of coming through. As in, you know, what Atletico are doing is they are doing natak or what they are just going with 1-0. I think that's what their tactic is. Or Ederson and co don't want that, and he obviously got agitated. Yep. Luis Diaz, what a player.
I don't know, yeah, matlab, he is going to be one big deal. Okay, they're not even getting up from the ground. It's kind of weird, na? Matlab 1-0 hai, ऐसे भी नहीं कि यार it's like 0-0 or something. Okay, look, they were, I think, without getting okay with Suarez it. on. Why are they not even? Why is the full time whistle not being blown? It's Yeah, हो way गया, past. हो गया. हो गया क्या? Okay. Nice job, Ankit, skipping my jokes. Hope it's understandable. I'm from Goa. Well, Adway, come on. As in, big up, yeah. Big up to Adway. Adway के बगैर ये stream नहीं होती. Come on. And by the way, Adway, yes, you're there on the panel Thanks. also. So Seriously, thanks for you've kept us awake and you've kept this whole stream just so motivated to entertaining. be very honest about it. That's the right word. Such में, Very that was honest. more entertaining than the. Yeah, it was a very long day. I have to be very honest about it. Lekin Same. again, the way Atletico played, man, as in 10 men behind the ball and whatnot. Even after 1-0, they were still the same. वो last, I think second half के maybe first 10 minutes से Dhenuka that you would say that hey, they are going for that goal. Apart from that, maybe they were okay for not going for the goal also. So that's No, what I would yeah, say. it's the second half you're talking about, no? The first. Yes. Yeah, where they looked like they were attacking and they were trying to go for a goal. But like you mentioned, right, not getting Suarez in, what are you even thinking? Like you're clearly not thinking of attacking. So I think they were going for this only. They were like, एक goal खा लिया, we'll sort of Yep. be happy. Yeah. By the way, again, we are coming to the end of the stream. Actually, this is not too bad a result for Atletico, to be very honest, because I honestly thought City would do much better than this. No, you're not too bad. Exactly, I agree with that 100%. Lekin we not going for that goal at all after conceding doesn't make sense. No, I'm saying the result. I'm saying result like is there, how 100%. How Atletico thinks, I think for them they'll be happy with this one. Yes, absolutely. Yes, big up to you for sure. Will both of you be available watch along for Madrid's game tomorrow? If yes, then where? I know that Baba will be doing a watch along. I'm yet to discuss with him. One of us will be doing a watch along. Chetan, so don't worry. We will be doing a watch along. It'll be either me, Baba, or let me check with Chirag also. They can usually as Chetan, आप जानते होंगे, like I am there on Baba's channel for Chelsea's games a lot of times. हाँ, लेकिन चैंपियंस लीग है, लाइक ऑनेस्टली मैं खुद वॉल्यूम के साथ अच्छे से देखना भी चाहता हूँ, लेकिन वही है यार, अगर इफ यू गाइस डोंट हैव अ प्लेटफॉर्म आई विल बी मोर देन हैप्पी टू कम बैक एज लॉन्ग एज यू गाइस कीप मी अवेक, इफ यू गाइस प्रॉमिस मी, बिकॉज मेरा तो यार फोकस गेम में रहता है in terms of the chat, because I'm quite kind of slow, I feel for taking the chat messages. Let's see, then we'll probably have a stream for sure. So stay tuned हमारे updates के लिए. Phil Foden, Luka Modric of City. What does he mean? I won't be there. Phil Foden is. We are doing a screening. Sorry, so I. Oh yeah, please. No, that's it. Yeah. But I don't know. Your screening isn't done. Is it? Like you have tickets and stuff, right? वो तो हो गया होगा already. हाँ, वो हो गया है. I mean, obviously, on the spot bookings भी होते हैं, सब कुछ होता है. But so we'll go to the venue in advance. Good. चलो, nice anyway. But yeah, we've come to the end. So Dhenuka, what do you take from tonight? Don't watch Atletico's games or looking forward to the next game? No, see, again, it should be interesting because I honestly thought that City would do better than this. And like I said, Atletico will be happy with today's result because the next game is home advantage to them. And playing at the Wanda Metropolitan is it's a different thing altogether. Like the atmosphere and everything, it's crazy. So I think Atleti sort of will be at the happier side. City should have like gone for the kill and at least been more decisive than this and should have come away with a better victory. But देखते हैं what happens. I think Atleti have the advantage over this game at least. Yeah, मतलब there is a genuine chance अभी तो. Let's take a couple more comments. Man, kudos to both, doing great job. You both and Dhenuka, Hala Madrid. Good night, guys. Good night. Thank you for joining. Ankit, डर मत यार, कोई नहीं. डर गया भाई, बहुत डर गया मैं, सच में. Portugal English problems continue after dream can't be by Bruno says Ronaldinho, a pure wash to joy. By the way,
seriously, I didn't get it, man. I'll be very honest and blunt about it. I know that Dhenuka got it, but this one I did not English get it. problems continue. After the dream can't be got. Bruno. Okay. नहीं. Since Ronaldinho कहाँ से आया? I think maybe some statement Ronaldinho. Again, it's about the time. But again, yeah, people, whoever is joining now, अगर आप late join कर रहे हो, do like the stream. हम target के दूर है. At least we are 50 away from the target. Do like the stream. Do subscribe. Do check out Bombay Penia's, Insta ID. The handle is there in the description below. You can check it out and just give them a follow, quick follow. I love the Atletico performance. Why not watch? Well, See, it's second a leg. different. Yeah, and also it's a different brand of football, right? But obviously there are people who like that as well, because if you purely look at tactics, this is one way of playing football. So Simeone's way. So there are people, I know Atleti fans, like die-hard Atleti fans. So why not? Yeah, by the way, we have Chinmay in the house. Chinmay, welcome, bhai. How are you? I think Chinmay was in the stadium as RCB got the victory today. He messaged me, so pretty happy. He's a great Manchester United fan in the house. He's been on the channel a couple of times, so hopefully we'll have you again, Chinmay. Big up to you for sure. Okay, his Twitter content. Okay, Adway. I'll check it out for sure. I think that's what you were, pointing towards. He was talking to his fans and said it's okay. I think Ronaldinho, I know, he was actually in Toronto, if I'm not wrong. He was there to watch the Raptors. Maybe मैं अगर होता तो definitely I would have hoped to catch him. Man. I've been there actually to watch the Raptors. Pep handshake करने जा रहा था पर सिमियोने खत्म होते ही भाग गया वापस से. Okay, I missed that. Oh no, man. I have to check it out. गर्मा गर्मी बहुत है मैच में. Yeah, गर्मा गर्मी तो थी यार. Last 25 मिनट तो खाली गर्मा गर्मी थी. We love that part. As neutrals, so we love it. Why Barca kill us at Bernabeu? Well, you still have a chance to come back. You are winning La Liga. If you are a Madrid fan, is what I'm assuming. Right? So you're winning La Liga. That's the bottom line. I don't think they are a pseudo. They are वो बोलते हैं ना wolf in sheep's clothing जैसा है. Okay. बाप रे ये क्या है? One forward bias and another reverse. Baba left already. आपको उनको ये बताना था ना. He was helping people out. मेरा हो जाएगा एकदम सर एकदम घूम जाएगा अभी. City going through, to be honest, can't see Atletico going past City. Well, let's see. As in, I know away goals are not there counting much, but let's see as in what it goes. Can't wait for tomorrow morning. Yes, absolutely. We'll catch up, Prasanna, hopefully in a couple of days. Tomorrow, by the way, people. Yeah, absolutely. And again, a lot of football. Very, very important day, especially for Dhenuka, for me, for a lot of Madrid and Chelsea fans in the house. Huge day, in fact. Of course, we cannot kind of count out Bayern. They are playing Villarreal, I know, but that's another one. We have already done the preview, so we'll be covering Europa League and maybe a little bit of Conference League. So do join us. We are live again, technically today. So we are live tonight at 10:30, 10:30 p.m. IST. Mark your calendars. I think Sadiq Bhai is in the house for sure. I am trying to get another fan in the house. Hopefully Sunday league pandit देखते कौन आता है. लेकिन हाँ, we'll have Europa League conversation, people. Let's just join in, right? It's just about the predictions and going through what Barca has this season, right? And I think couple last comments. There is the 0 shots by Atletico Madrid, typical Simeone game, but they have to try to score. Yeah, exactly. What try we are not very happy about, right? Anshuman in the house as well. Anshuman is also a big Manchester United fan. The great channel United Road. Hala Madrid for tomorrow night. I'll take it, Hala Madrid. Yeah, come on, Anshuman bhai. आप तो यार मेरे साइड से क्या हुआ? कोई नहीं. अपना टाइम आएगा. Yes, good night to you all, and of course, I've been keeping Dhenuka here as well. Dhenuka, thanks a lot for coming on. Anything that you would like to share? Any last final words of Divere Ankit, Divere Chelsea? नहीं यार मेरी टीम ठीक से खेल जाए वही बड़ी बात है. Yeah, good luck for tomorrow's game, and I like I was saying, this is probably the one time where both teams are pretty equal in terms of like what's been going on and the performances and everything. Last season it was Chelsea was much higher, I would think, than Real Madrid, the squad they had and the way we were going in the league and whatnot. But this time I think it's going to be an equal match. Let's hope it's an interesting match, a good match. So yeah, absolutely, 100% agreed there. Just as long as Chelsea wins, I don't care. Put it that way. Bottom line. But I actually predicted a draw for tomorrow, by the way. Interestingly.
Yeah. Again, I've kind of gone from, we should win easily to, okay, we might just scrape through. I think yesterday के stream में we did it, or आज I have gone with again a win. So it's like really, moody. But the fact is, वही है, it'll come down to, that taking the chance or who goes for the match. For me, it'll be Yeah, a stalemate. And that's quite possible. So Dhenuka ne bola, I think I agree with that. It's quite possible, especially the first leg. Uh, Benzema hat trick, यार भाई अंशुमान, come on. हो गया बस, अब आप मैड्रिड फैन में कन्वर्ट हो जाओगे, बोलो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन से क्या हुआ? आई थिंक या यू आर प्रॉब्ली रोनाल्डो फैन, आई एम गेसिंग. वही मैं बोला ना, रोनाल्डो फैक्टर आ जाता है, मैड्रिड में सॉर्ट कर ऑटोमेटिकली यार. Waiting for Liverpool versus Bayern. Well, all the best for that. But by the way, everyone watching, I hope everyone has liked the stream. Do like it, do share it, and of course, we'll be back, like I said, 10:30 p.m. tomorrow. I think technically today for the Europa League, Conference League, and Barca talk. Score, please. Okay, last comment le lete. So basically, Liverpool have beaten Benfica 3-1 away. First leg, goals by Konate, Mane, and Luis Diaz. And Manchester City have won 1-0 at Manchester City against Atletico Madrid, and it was KDB with the goal, right? So I hope that's good. Yes, I did see the replay, but that's what actually he's got to the team, right? Let's see, as in we're looking forward to for sure, and yeah, that's about it for now. Everyone, see you soon. Dhenuka, thanks a lot, no worries. It was my pleasure. and wish you all the best for the game. Thanks, same to you. Bye.